Good morning, everyone. My name is Ankita Adhikari, and I'll be taking computer basics as well as general knowledge. So, before we start for the session today, as I know that you'll be appearing for a CET entrance, right? And probably you have your background coming from commerce, right? So, before I ask you how much do you know about computers, I'll just quickly introduce you to your syllabus. For you have subjects like I think English, reasoning, general knowledge, and computer basics, right? So you can see the marks distribution. For computer basics and general knowledge, you will be having 15 marks. So both of them together make up to 30. Okay. And you'll have 1 mark per question. As of now, no negative marking. Okay. And the total number of questions which you will be appearing for your exam is 100. So out of 100, you will have 30, in which 15 will be for your computer basics and another 15 will be for your general knowledge, GK. Okay, and your English has, I think, 40 and reasoning has 30. So again, one mark each. So the major weightage goes for your English and reasoning, and the minimum weightage comes towards computers and general knowledge. Okay, so now I come to my question that how much do you know about, see, I know that commerce students have IT, right? I mean, maximum of you have, otherwise few even opt out. So how many of you have appeared for IT, information technology? Okay, as of now only one. Rest others fine. See, for appearing this particular paper online, even you can interact if you want. So for appearing for this particular paper, you will need a generalized knowledge about computers. So you have been using computers since your school time. And of course, you're very tech savvy because you have your mobile phones, which are, of course, of high configurations. And you might be even playing games online, or you might be having gaming portals at home. So you are quite aware about it. So if you see this particular diagram over here, now your entire syllabus is divided into topics. Like you'll study about memory, then you'll study about what is a central processing unit, that is CPU. Then you'll study how the internal instructions are executed in the computer. Okay, I hope you all are fine with English. I'll switch to Hindi also if you want. Okay, so the very first topic your syllabus has is CPU. Okay, so look, this is a generalized architecture. We talk about your central processing unit. So you have desktops at home, घर पे computers रहेंगे, laptops, whatever. But I would prefer talking about desktops. So desktops में do you have, what other components do you have? If you purchase from the market, आप क्या क्या purchase करते हैं desktop के form? Mouse लेंगे, yeah, you need a CPU, that big cabinet kind of. Then printer is secondary. ले printer नहीं रहेगा तो भी मेरा system, yeah, monitor, then CPU, then what else do you require? Keyboard and mouse. You can happily interact. I'm not going to shout at you. Okay, I know it's your first day, so you'll take some time, but it's fine. So these are the at least 4 basic things you'll require when you purchase a computer. Okay, now if I tell you that I bought the monitor, the screen which we talk about, then I have a keyboard, I have a mouse. I just got these 3 things from the market. So is it sufficient to on the computer system? Why then? Network to accessing, like to socialize. Yeah, the main cabinet which you see, if that consists the thing called as a processor. Okay, so I'll tell you that the cabinet in the computer system is called as the brain of your computer system. Okay, and then the processor which you see inside, like I don't know if I can get someday, we have 5 turns. So I have my motherboards. If I can get to show you, I can definitely get. So the processor consists of a term called as operating system. ये तो सुना रहेगा ना, OS बोलते हैं आप, right? So what that OS stands for? It stands for operating system. Now this operating system is the heart of your computer system. So always remember these 2 terms. What's the brain? CPU. What's the heart? OS. Okay. Now I'll again tell you, मैंने CPU खरीद लिया, ठीक है, but उसमें मेरा प्रोसेसर नहीं है. सिस्टम को मैंने पावर ऑन किया, सब प्लग कर दिया, चालू हो जाएगा, क्योंकि there is no heart in the computer system. So whenever you turn on, आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं तो आपने देखा रहेगा कि आपके कीबोर्ड पे 3 लाइट्स है, वो थोड़ा फ्लैश होती है,
फिर मॉनिटर के स्क्रीन पे नीचे के साइड पे एक आपको ब्लू और ग्रीन लाइट दिखेगा या येलो लाइट दिखेगा, वो भी फ्लैश होता है। योर माउस इफ यू टर्न अपसाइड डाउन, उसके नीचे भी आपको एक रेड कलर का लाइट दिखता है। सो दीज लाइट्स आर इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ पावर सप्लाई गोइंग टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। अगर एक भी कंपोनेंट में आपको लाइट नहीं दिखा तो आप खुद ही समझ जाते कि इसमें पावर सप्लाई नहीं जा रहा है। सो इफ इट इज अ वायर्ड माउस, माउस में भी आपको पता रहेगा टाइप्स है ना, वायर्ड एंड वायरलेस, ठीक है। सो अगर वायर्ड माउस है, सो यू विल डेफिनेटली कम टू नो, if it is a wired mouse, then you will come to know that okay, so if it is a wired mouse, then you will come to know that there is no light. If it is a wireless, still you will come to know that there is no light, because wireless कैसे connect होता है, कभी try किया है? Do you have wireless mouse? एक छोटा सा dongle जो बोलते हैं जिससे, जिसको आपको आपके अगर आप लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो यूएसबी का पोर्ट रहता है ना, वहां पे कनेक्ट करना पड़ता है, या फिर आपको सीपीयू में पीछे के साइड पे यूएसबी के। सो विदाउट दैट डोंगल इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो ऐसा समझ लो कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर को आती है, वो लैंग्वेज ह्यूमन से इंटरैक्ट करने के लिए कोई तो बीच में चाहिए, सम इंटरफेस, ठीक है। सो कमिंग बैक टू सीपीयू, सो आई टोल्ड यू दैट सीपीयू इज द हार्ट, sorry, the brain of your computer system. OS is the heart. If I don't have the processor, it is not going to work. Now only having a processor is not going to help, of course, क्योंकि अगर प्रोसेसर है तो OS है, तो आपका सिस्टम चालू तो हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है, I edit something current right now and then I close it. So while closing, the system will always ask me that do you want to save it? Do you want or not? So if you want to, do you want to save it or not? So if I want to save, then of course I'll require something that will have a storage, no? You purchase mobile phones. So in your mobile phones, you always prefer for something which has higher memory, राइट और आपने ये भी नोटिस किया रहेगा कि अगर आप ज्यादा मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन वाला मोबाइल खरीदते हैं तो प्राइस भी ज्यादा पे करना। यू मस्ट हैव सीन सेम डिफरेंस कम्स व्हेन यू टॉक अबाउट डेस्कटॉप। अगर आप डेस्कटॉप में हाई कॉन्फ़िगरेशन का मेमोरी स्टोर लेना चाहते हैं, से हार्ड डिस्क और योर रैम, ठीक है, तो यहाँ पे तभी आपको ज्यादा प्राइस पे करना। तो दैट इज हाउ द मार्केट, कंप्यूटर मार्केट वर्क्स। सो कमिंग बैक टू, सो अगर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम या सिर्फ प्रोसेसर रहने से कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा, यू रिक्वायर, सी आई एम टॉकिंग बट until unless you don't interact, I will not be able to judge whether you are understanding or not. So the same thing happens with the computer. Only having the OS and only giving the UI is not going to help you use the computer system. Okay, so to store whatever actions you're performing in the computer, you have a term called as memory. So coming back to this diagram, the very first thing I told you is CPU. Now CPU stands for Central Processing Unit. Now when you see the CPU cabinet at your home, आपने देखा रहेगा कि आपको एक साइड पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक जाली जैसा कवर रहता है थोड़ा सा, वहां पे हाथ घुमाओगे तो एक हीट फील होती है। इवन इन द लैपटॉप्स यू विल फील द सेम, at some point at down you'll see that it is heating and it is probably generating, so that is nothing but there is a fan. Okay, now how do I judge कि मेरा सिस्टम बराबर चालू है कि नहीं? I judge it with the help of the fan. Okay, because अगर मेरे सीपीयू में पावर नहीं जा रहा है, एसएमपीएस करके रहता है, ठीक है, जो पावर सप्लाई का काम करता है, अगर उसमें पावर नहीं जा रहा है, so the fan is not going to rotate, and if the fan does not rotate, I will come to know that there is no power into the CPU. Is that clear? Of course, आप power button दबाएंगे तो उसका लाइट भी नहीं आएगा, so you will come to know that there is no power inside the CPU. Okay, now this CPU, as per this is the architecture. If you want, you can later on see at least computer basics. I'll suggest keywords note down कर देना whenever I tell you, so it will help you for MCQs. Okay, now this is the architecture. Now in this architecture, if you see, the very first thing we'll talk about is the CPU, Central Processing Unit, which is the brain of my computer system. And if I ask you what's the heart, then OS. OS is situated where? Where do I find? Do I motherboard open करके मैं OS ढूंढूंगी तो मुझे मिल जाएगा क्या? नहीं, I'll find it where? In the processor. Okay, so heart is the processor, brain is the CPU. Now you'll see other three components inside here. So I'll first take you to arithmetic logic unit.
नाउ दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ALU. आपको एग्जाम में शायद अगर पूछा गया तो ALU find, you will find something like that. So don't get confused. ALU is a short form for arithmetic logic unit. Now what does this arithmetic logic unit do? Now see, I am communicating with you, okay, by a language which you understand. Now I have barriers, like मुझे सिर्फ English, Marathi, Hindi, Gujarati इतना ही आता है. If you start talking in Tamil, I will not understand. Same is with the computer system. Computer system को एक ही language समझती है. That is, do you know which language it is? It is called as a binary language. And binary means bi means two. Now those two means what, you know? It is 0 and 1. So system में anytime when the computer system is communicating with the user or whatever instructions it is taking, it is always decoded in 0 and 1. Okay, now suppose if I tell you that I'm trying to add, say 5. Suppose I'm trying to add 5 and 3. 5 and 3. So if I'm adding 5 and 3, so that 5 is for me on the keyboard, right? तो जब मैं प्रेस करती हूँ तो वो सिस्टम को कैसे पता चलता है कि मैंने 5 प्रेस किया? आई एम जस्ट प्रेसिंग फ्रॉम द कीबोर्ड. यस, वो पहले से कॉन्फ़िगर्ड रहता है, मतलब उसके अंदर एक एनकोडर डिकोडर नाम की चीज रहती है, वो चेंजेस कर. सो मैंने देते टाइम 5 बताया, सिस्टम को 5 नहीं समझता है. सो दैट 5 इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी लैंग्वेज दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ 0 एंड 1. ठीक है. नाउ बाइनरी लैंग्वेज ये कंप्यूटर को समझता है. अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे नंबर सिस्टम्स है, ठीक है, जो कन्वर्जन होते हैं. सो सपोज बाइनरी सबसे पहले, उसके बाद बोलते डेसिमल. सो आई टेल यू द रेंज. बाइनरी का रेंज है 0 एंड 1. डेसिमल तो आपको भी पता रहेगा. व्हाट्स द आइडियल रेंज? डेसिमल का आइडियल रेंज no decimal, there does not have floating, like no decimal is 0 to 9. अगर मैं ऐसे बोलूं 521, so that 5, 2 and 1 lies in which range? 0 to 9. Is that clear? If I'm telling you that decimal में dot decimal नहीं बोल रही हूँ मैं, I'm talking about it is a number system. So binary is a number system which has two numbers, that is 0 and 1. Decimal is a number system which has 9 numbers and they start from 0 and at 9. So agar if I tell you, if I tell the computer system 720, so that 720 lies in which number system? Decimal number system. Is that clear? ठीक है. और फिर वहां से वो अभी सिंस यू आर नॉट हैविंग मच इन डेप्थ, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन जनरल कि फिर वो 720 को डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करता है. तो आप जैसे जैसे इनपुट देते हैं वैसे वैसे वो उसको कन्वर्ट करेगी. देन द थर्ड नंबर सिस्टम इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. ठीक है. ऑक्टल का रेंज इज 0 to 7. अभी आप पूछेंगे मैम 7 के बाद क्या स्टार्ट होगा? तो 8 9 स्टार्ट नहीं होता है, सीधा 10 स्टार्ट होता है. ठीक है. सो इट्स 0 to 7. Then if I ask you the fourth number system is hexadecimal. Now hexa में means अभी यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे मैंने अल्फाबेट्स का जिक्र नहीं किया, बट कीबोर्ड पे अल्फाबेट्स रहते हैं ना, तो उसका कन्वर्जन सिस्टम कैसे करेगा? सो अल्फाबेट्स में भी A to F. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दो रेंज आएगी. एक है 0 to 9 जो डेसिमल में है, एंड दूसरा है A to F. So if you'll say that, ma'am, how does it start with the reading of the numbers? Then it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 9, it goes to A. A, B, C, D, E, F. And after F, it is 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. ऐसे ये number system बहुत बड़ा चलता है. Is that clear? So 4 number systems the computer system has. First one is binary. What's the range? 0 to 0 or 1. So always remember it's either 0 or 1 or combination of both of them. ठीक है. Then second is decimal. What's the range? 0 to 9. Third, octal. What's the range? 0 to 7. And last, hexa what? Octal, hexa, binary, hexa, decimal what? तो हेक्सा याद रह गया. उसके बाद दो रेंज है ना इस नंबर सिस्टम में. तो पहला तो A to F है, दूसरा किससे ले रहा है? वो डेसिमल से ले रहा है ना, 0 to 9. इसीलिए हेक्सा डेसिमल. हेक्सा मींस फॉर A to F और डेसिमल फॉर 0 to
नहीं, I'll repeat. बाइनरी का रेंज 0 और 1. डेसिमल, हेक्साडेसिमल, मैं ऊपर नीचे भी पूछ सकती हूँ. A to F एंड 0 to 9 एंड ऑक्टल. ओके फाइन. अभी मैं आपको हर एक नंबर सिस्टम का ना एक बेस रहता है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जब कन्वर्जन होता है. ठीक है, लैंग्वेज में गुजराती लिखती हूँ तो वो मराठी से थोड़ा अलग लगता है. कुछ अल्फाबेट सेम है, अदरवाइज थोड़े अलग रहेंगे. सो डिफरेंशिएट कैसे करोगे दोनों नंबर सिस्टम में? तो जब भी कोई नंबर लिखा जाता है तो उसको एक बेस दिया जाता है. ठीक है, तो दैट बेस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि कौन से नंबर सिस्टम से आ रहा है. ठीक है, सो इफ आई टेल यू दैट suppose if I write it like this. So now are you able to understand that what am I talking about? बेस, इसको बेस बोलते हैं नंबर सिस्टम का. सो मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा? व्हाई डिड आई राइट 2? स्क्वायर ऊपर है. I am an engineer but not a lover of maths. Like, but still square root तो ऊपर लिखते हैं ना. स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, रूट साइन इज डिफरेंट. व्हाई एम आई राइटिंग 2 over here? Okay, I'll write 4 numbers. You tell me why the reason is like that. No. Any idea? थोड़ा सा जोर दो. बाइनरी पे आते सबसे पहले. नहीं, वो भी नहीं. या समवेयर थोड़ा या नियर. अभी सपोज बाइनरी में आपने क्या बोला, कितने नंबर्स है? 0 और 1. हाँ, तो आइडियली कितना रहेगा? तो उस नंबर सिस्टम का बेस कितना रहेगा? कितने नंबर्स यूज किए मैंने इसके अंदर? आइदर 1 यूज किया या फिर 0 यूज किया. डोंट टेल मी कि यहाँ पे आपने 4 नंबर्स लिखे. आई एम नॉट टेलिंग दैट. मैं से उसका अकरेंस पूछ रही हूँ. यू आर यूजिंग आइदर 1 और, so that's the reason the base of binary number system is. Got it? Now I take you to decimal. Decimal का रेंज आपने क्या बताया? 0 to, काउंट करो कितने हो गए टोटल? 10. That's the reason the base is 10. Then octal का रेंज आपने क्या बताया था? 0 to 7. कितने हो गए टोटल? तो उसका रेंज दिख रहा है, बेस 8. Then hexadecimal आपने कितना बताया? 0 to 9 and A to F. टोटल कितना हुआ? That's the reason the base is that clear? So how many number systems ideally the computer system has? 4. Binary, decimal, octal, hexadecimal. Binary का base is, then hexadecimal, 6. A to F and 0 to 9, that means it is 16. Then decimal, 0 to 9, that means it is 10. And octal, 0 to 7, that is 8. Got it? So I just want you to note down. Just if you have, if you don't have, तो आपके पास जो worksheets है उसमें कहीं पे side में you can note down. Just note down the full form of what is CPU, Central Processing Unit. Brain क्या? ऐसे देखो, brain CPU, heart OS. And in the bracket, if you want, you can write situated where. Where is it situated? Where is it situated? I don't have a pocket. Where is it situated? Inside the processor. Yes. Just the keywords, not lengthy answers we'll write. So that when you, and of course you'll have to, in case if I see you again in the next lecture, then I want you to just quickly revise this and come. Online students, I think even you're there with me, right? So just quickly, I'll just give you a few points. Yeah, you can just note down a few points. Write down the full form for CPU, that is Central Processing Unit.
Then in the bracket, you can write that's the brain of your computer system. Then next, you can write OS, that is operating system, that's the heart of your computer system. Of course, even write down the full form so that in case if it is asked, then you know. Done? Done with these 2 points. Then you can just give the heading as number system. Just give the heading as number system. Then for number system, you can write, first one, you can write binary. If you can make 3 columns. So first will have the name of the number system, second will have the range, third will have the base. तो आपको एक ही बार में तीनों लिख के हो जाएगा. You can make a table with 3 columns. First column you can give as name of the number system, second is the range, third is the base. Okay, online. So even you can make that table. So first number system, you can write binary. You know the spelling of binary, right? What's the spelling? BINARY. I'm just checking that you guys are sleeping or awake, because since it's quite early for you and after, see, he's smiling. So I am correct. Actually, when I came, I saw that you were like, "Neend aa raha hai yaar," right? So what's the range for binary? 0 and /1. Just don't write 0 to 1, just 0/1. And what's the base for binary online? The base is 2. Then next number system, you can write decimal. What's the range for decimal? 0 to 9. And what's the base for decimal number system? 10. आपको चाहिए तो आप ये भी एग्जांपल्स में कहीं पे लिख सकते हैं, साइड में वहीं पे. So you know. अभी इतना याद रखना कि ऑक्टल नंबर जो सिस्टम है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसमें जो नंबर्स दिखेगा आपको वो 0 to 7 में ही रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा. It will not go to 8 and 9. Of course, it can be 89 or it can be because it has that number later on. But सिर्फ 8 या 9 ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है? Because it does not lie in the range. Okay. So third was what? Octal. What's the range for octal? 0 to 7. Base. How do I identify the base? The total number of numbers in the range. That's 8. And last till right, hexa decimal, क्योंकि decimal के 0 to 9 भी है उसमें, और hexa means alphabets भी है, that is A to F. And what's the base for it? 16. Okay, done. So now you know the number system. So you can say that these are the languages my computer understands. As I gave you mine, these are computers. And in case the user gives any one of them, they are all by default converted into binary. If you come to science standard 11, the very first thing they study is the conversion of number systems. Okay, because they have to know the conversion, that is from binary to decimal, decimal to binary, then binary to hexadecimal, hexadecimal to binary. In fact, hexadecimal से decimal का भी conversion. ठीक है? So अंदर बहुत सारे conversions है. So not to worry, any type of input you give, the system is going to convert it into binary. Okay. So now next thing I'll tell you is we studied the number system, brain, heart, everything is done. हाँ.
You keep the xeroxes of your receipt or the original receipt with you? लवकर पाठवा त्यांना, तोपर्यंत मी थांबते. Okay. So coming back to this binary thing, because सब कुछ conversion binary में हो रहा है, computer understands binary. So now binary has three types of numbers. Now when I talk about a bit, B-I-T, when I talk about a bit, what it can be? How many digits do you think it will have? 1, 2, 3, 4, 5. How many? 8, 10. It is a bit. Yes, correct. So that's only one. So when I talk about a bit, so either it is 0 or it is 1, because now I'm talking only about binary number system. Okay. So either it is 0 or it is 1. Now suppose if I talk about जग रहा है ना? Okay. Now suppose if I talk about, I write इसके पहले एग्जाम्पल आपने लिखा था, मैंने ऐसे कुछ लिखा था ना, ऐसा कोई फोर डिजिट्स नंबर था, तो उसको बाइनरी में बोलते हैं अ निबल, NIBBLE. So if I ask you, a bit means either 0 or 1. And a nibble has how many bits? So can you count the number of bits? 4. And then if I talk about this term called as byte, जो आपने सुना रहे, तो ये byte means how many bits, 8 bits. So if I give you a question that what is a bit, so you will say it is either 0 or 1. If I ask you what is a nibble, so you will say how many bits make a nibble? So it is, and if I ask you how many bits make a byte, then it is 8. And then it goes on into the multiple. Okay, so one bit is either 0 or 1. Nibble is 4 what? 4 bytes or 4 bits. Then 8 bits are how many? 1 byte. Is that clear? I'll repeat. If I talk about a bit, it is either 0 or 1. If I talk about a nibble, then how many bits in that nibble? 4. And if I talk about a byte, then how many bits you will find in that byte is 8. So this is 4 and this is 8. So the question can come, 8 bits make how many bytes? So how many? 1 byte, 2 byte, 3 byte, 1. Suppose if I say 16 bits make how many bytes? Got it? 32 bits make how many bytes? Yes. Is that clear? Understood? So you can note this down. You can just write bit. That means either 0 or 1. Nibble is equal to 4 bits and byte equal to 8 bits. तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा, थोड़ा रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं. Okay, online I hope even you are noting down just keywords. For bit you can write 0, 1, nibble you can write 4 bits and byte you can write 8 bits. Okay. तो आप प्रोसेसर में आपको पता रहेगा ना 32 या 64 ऐसा रहता है. अभी तो जनरली सब 64 बिट प्रोसेसर. So 64 bit means what? Why do I specify not in bytes and why only in bits? कभी ऐसा दिमाग में आया कि मैंने माउस पे क्लिक किया, कीबोर्ड पे बटन प्रेस किया, कैसे वो प्रोसेसर तक कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि अब मदरबोर्ड देखेंगे तो मदरबोर्ड पे प्रोसेसर इज समवेयर इन बिटवीन, लाइक सम, ओके, एंड इट इज विजिबल दैट इट्स अ प्रोसेसर. बट ऐसा कोई उधर वायर कनेक्ट नहीं हो रहा है जो आपके कीबोर्ड से जा रहा है. ऐसा कोई वायर कनेक्ट नहीं हो रहा है जो आपके मदरबोर्ड, आई मीन माउस से जा रहा है या मॉनिटर से जा रहा है. सो हाउ द प्रोसेसर इज डूइंग एवरीथिंग दैट यू आर टेलिंग द कंप्यूटर टू.
हाँ वही मदरबोर्ड रहता है वो ग्रीन। हाँ तो यस, जब प्रोसेसर, मेरे पास प्रोसेसर नहीं है बट मदरबोर्ड पे जो आप बोल रहे हैं वो पिन्स है। सो दैट पिन्स नो, इट इज कॉल्ड आइदर, अभी तो उसको डुअल इनलाइन पिन पैकेज बोला जाता है। तो व्हाई डुअल इनलाइन, यू नो, कभी आपने कोई आईसी देखा है ब्लैक कलर का? I don't know whether you must have seen or not. Well, I got, later on you can just Google it while going home if you want to. So IC has pins both the sides. So that is the reason we call it dual inline. क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ ना, सी माय स्टैंडर्ड 12th हैज अ प्रोसेसर कॉल्ड एज 8085, और उसको बहुत पुराना, बहुत ही पुराना प्रोसेसर है, ठीक है, अभी वो एज को प्रोसेसर यूज होता है बेचारा, लाइक लगा तो, अदरवाइज इट इज नॉट, एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टिल वेरी चीप, यू गेट इट एट मार्केट एंड एट अ वेरी चीप प्राइस। So that processor is a 40 पिन प्रोसेसर। तो अगर मैंने 40 पिन डुअल इनलाइन बोला ना, दैट मीन्स उस प्रोसेसर की एक जो चिप रहेगी उसके दोनों तरफ पिन्स है। सो आइडियली उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे रहता है कि एक तरफ 20 पिन्स आ गई, दूसरी तरफ 20, and that is how it makes up to 40. So that's why a processor, that's how it is. It is a 32-bit processor, means अभी not necessary कि उस प्रोसेसर की 32 पिन्स ही रहेगी, depends on the design configuration of which company it is, वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। So done with the number systems and what is a bit, what is a byte, what is a nibble. Now we come to the architecture. Now, very first thing you saw was CPU. Next, I'll tell you to take you to this arithmetic logic unit. Now, as the name says, ALU, arithmetic logic unit. So, whatever arithmetic calculations are performed in your computer or logical calculations, logical means, like, of course, you must be not knowing it. There are logic gates, and it is called as AND gate, OR gate, NOR gate, NOT gate. अंदर का सिस्टम इसी गेट्स पे चलता है, ठीक है। तो वो सारे कम्युनिकेशन और जो भी एडिशनल एडिशन कम्युनिकेशन करने हैं, ठीक है, वो सारे कम्युनिकेशन करने के लिए कोई तो एक सुपरवाइजर चाहिए ना। द प्रिंसिपल कैन नॉट टेक 10 क्लासेस एट द सेम टाइम, दैट इज व्हाई शी और ही अपॉइंट्स अ क्लास टीचर। Same is over here. The processor cannot be everywhere. So the processor what does what? It has a component which will handle a particular task. So whatever, see, suppose as I said, I was doing 5 plus 3. So that plus indicates what? Addition. So that addition is what kind of, it is arithmetic or logical? What do you think? Logical में आपका data type करना, save करना, ये सब भी आता है. So it's of course arithmetic. तो ये प्रोसेसर करते नहीं बैठेगा, वो किसको बोले, कौन करेगा, वो यूनिट करेगा, एएलयू यूनिट करेगा, ठीक है। फिर आपने जो भी डेटा, आपने सपोज कुछ टाइप किया, कुछ इमेज ड्रॉ किया, या यू नो कट कॉपी पेस्ट किया, सो सम काइंड ऑफ लॉजिकल टास्क यू डिड विद द कंप्यूटर सिस्टम, वो कौन हैंडल करेगा, उसी यूनिट का लॉजिकल पार्ट हैंडल। इज दैट क्लियर? अभी आई टेक यू टू द वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल, इज द कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर यू मस्ट बी हैविंग, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेटर इन द फोन, the other manual calculators which you have. Now आपने कैलकुलेटर का स्क्रीन देखा रहेगा तो वो आपको कुछ ऐसा दिखा रहेगा ना। You must have seen the screen looks something like this. मतलब आपके जो नंबर्स, ऐसा कुछ दिखा था, ऐसा दिखता है एकदम फेडेड, और आपके जो नंबर्स डिस्प्ले होते हैं वो नंबर्स भी कुछ ऐसे, सपोज इफ इट इज डिस्प्लेइंग 2, then it is going to display it like this. आपने लिफ्ट में भी देखा रहेगा आपके बिल्डिंग, the elevators which you have in the building. So this kind of display is called as a 7 segment display. तो 7 segment क्यों, आप उसकी लाइंस काउंट करेंगे तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और नॉट टू गो मच इन डिटेल, बट आई वांट यू टू नो दैट हर एक सेगमेंट का एक लेबल है, एंड इट इज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आप उसको उल्टा पुल्टा लेबल नहीं कर सकते। सो इट लेबल्स लाइक ए बी, ठीक है। तो आपने कैलसी में सपोज 5 plus 3 5 प्रेस किया, so when you press 5, assuming that you know the decimal number system, so you pressed 5, but the inside the components inside that calculator does not know that decimal number system. तो वो क्या करेगा, 5 का क्या कन्वर्जन करेगा, कौन से लैंग्वेज में कन्वर्जन करेगा, कौन सा समझता है कंप्यूटर को, कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 5 का बाइनरी कन्वर्जन करेगा, ठीक है। देन दूसरा नंबर मैंने क्या प्रेस किया था, 3, 3 का भी क्या करेगा,
बाइनरी कन्वर्जन करेगा। अभी उसको सपोज दो बाइनरी नंबर्स मिल गए, ठीक है, ऐसे दो बाइनरी नंबर्स मिल गए, अभी इसके बाद उसका एडिशन करना है। सो दैट कन्वर्जन विच वाज टू बी डन फ्रॉम द डेसिमल टू बाइनरी, दैट यू कैन से द लॉजिकल पार्ट इज डूइंग, and the actual addition which is to be done is who's doing that, the arithmetic unit is doing. Is that clear? तो बाइनरी सी कंप्यूटर सिस्टम में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो अभी मैं आपको ऐसे एक सिंपल फंडा बताती हूँ कि एडिशन भी ना ऑफकोर्स प्लस साइन से होता है, बस सब्ट्रैक्शन भी प्लस साइन से ही होता है इंटरनली। आपके लिए आप माइनस प्रेस कर रहे हैं, बट अंदर जो सर्किट डिजाइन किया जाता है वो एक टूस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज टूस कॉम्प्लीमेंट, आई टेल यू दैट। अभी टूस कॉम्प्लीमेंट जाने के लिए आपको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नाउ वंस कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट यू नो, सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस नंबर 101, इसका इन्वर्ट कर दो, इन्वर्जन समझता है, उल्टा, ठीक है, जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दो, 0 है वहां पे 1 कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 101 का उल्टा क्या करेंगे, 0 1, दिस इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट, सिंपल मैथ्स, ठीक है। एंड देन टूस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो आपको हमेशा याद रखो ये वाला जो बिट रहता है ना, जो लास्ट में, बट वेयर ऑन योर राइट हैंड साइड, ठीक है, उसको आप 1 ऐड करोगे। व्हाट विल यू ऐड ओवर देयर, 1। सो बाइनरी एडिशन के रूल्स थोड़े अलग है, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन में 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 1, ऐसा यही 4 रूल्स। आपको जो मम्मी एडिशन सिखाती थी बचपन में वो क्या था, 1 प्लस 2, 2 प्लस 4, ऐसे एडिशन आते थे। बाइनरी में वैसा नहीं होता है, बाइनरी में 4 ही रूल्स है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 1। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, दैट इज टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपको एक एमसीक्यूज में मैंने क्वेश्चन भी डाला है कि सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड हाउ, सो इट्स परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट, रिमेंबर दैट। इज दैट क्लियर? तो अगर वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा गया एग्जाम में तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, just by inverting the number. Suppose if it is 101, it is inverted to 010, and then if you have to find out 2's complement, आप क्या करोगे, उसके राइट हैंड साइड का जो बिट है उधर क्या ऐड करोगे, 1, ठीक है। इतना डिटेल नहीं क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इतना आ सकता है कि सब्ट्रैक्शन वंस कॉम्प्लीमेंट से होता है या टूस कॉम्प्लीमेंट, सो कौन से कॉम्प्लीमेंट से होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट, रिमेंबर दैट। Okay, so then you know that how this arithmetic and logical unit is basically working. Okay, now I come to the control unit. Now I asked you some time back that how does these components which are there inside, processor है, आपका कीबोर्ड है, माउस है, और मदरबोर्ड पे बहुत सारी चीजें रहती है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। लैंग्वेज पता चल गई कि बाइनरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बट कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज बसेस। Okay, general simple term, it is called as a bus. Now this bus is of 3 types. Now if I tell you that the first bus is called as a data bus, second bus is called as the address bus, and the third bus is called as the control bus. Now if I talk about the data bus, then as the name says, क्या carry करेगा, बस है मतलब वो carrier है, एक destination से source to destination, destination source वैसे signals carry करता रहेगा। तो एज आई टोल्ड यू दैट डेटा बस नाम है तो क्या कैरी करेगा, डेटा। एड्रेस बस है तो क्या कैरी करेगा, एड्रेस, ठीक है। कंट्रोल बस को फिलहाल साइड में रख देते हैं। सो अगर डेटा बस डेटा कैरी कर रहा है, तो मैंने अगर आपको बोला कि जो 8085 प्रोसेसर का सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, जो स्टैंडर्ड 12th को है, ऑफ कोर्स नॉट यू, ठीक है। तो 8085 8 बिट का प्रोसेसर है। 8 बिट मींस कितनी बाइट्स हो गई, how many, 8 bit means how many bytes, 16 bits how many bytes, 32 bits how many bytes, समझा, याद आया, बिट, सिंगल बिट, निबल एंड बाइट, ठीक है। सो 8085 8 बिट का प्रोसेसर है। तो हमेशा याद रखो कि अगर आप बोल रहे कि मेरा प्रोसेसर 8 बिट का है या 32 बिट का है या 64 बिट का है, सो दैट मीन्स कि उसका जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी है वो उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं। So if the processor is of 32 bits, then the data which can be carried at that time is how much? 32 bits. If you tell me the processor is 64 bit, so the data which is carried from one component to another component is how much? 64 bit. इसलिए आप डिफरेंस पता चल सकता है 32 बिट का प्रोसेसर का स्पीड एंड 64 बिट के प्रोसेसर का स्पीड, जो रिस्पॉन्स टाइम रहता है सिस्टम से, वो डिफरेंस में ही आपको समझ जाए। इज दैट क्लियर?
तो डेटा बस क्या करता है मालूम है ना? सपोज इफ आई टेल यू, आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चन, आई एम सेंडिंग सम डेटा, you are replying me with some answer, you are sending some data. So it is a bi-directional thing, no? The data, I opened this document. When I opened it, it already had 2 pages. Assuming कि मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करते टाइम कुछ एडिट करके, सेव करते टाइम 2 के 4 पेज हो गए. So while I was opening this particular file, मैंने मेरे हार्ड डिस्क को रिक्वेस्ट किया, प्लीज ये फाइल ओपन करके दे दो. ठीक है, तो इट केम फ्रॉम द हार्ड डिस्क. अंडरस्टैंडिंग? एंड देन जब मैंने उसको एडिट किया एंड अभी सेव करना है, तो इट इज गोइंग बैक वेयर टू द हार्ड डिस्क. सो दैट बस हैज टू बी बोथ द वेज, नो? सिर्फ वन डायरेक्शन में रखा तो मैं सेव करने जाऊंगी तो वो सेव करेगा क्या? नहीं. ऑलवेज रिमेंबर. सो दैट्स द रीजन डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल. इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ बाई डायरेक्शनल बस. ठीक है, सो आई टेल यू अगेन, हार्ड डिस्क आपका प्राइमरी स्टोरेज है, मतलब सेकेंडरी बोला जाता है, प्राइमरी आपका रैम रहता है हमेशा. तो आप जो भी कंप्यूटर में कंटेंट सेव करते हैं, सो दैट इज इनसाइड द हार्ड डिस्क. सो दिस फाइल आई हैड क्रिएटेड say yesterday, I opened it today. So when I opened it, it was stored somewhere in the hard disk. My system did what? I told my processor. When I double click that file, no, I'm telling the processor open this file and give it to me. So what does the processor do? The processor tells the hard disk that take this memory location and open that file and give it to the user. तो हार्ड डिस्क को फाइल किसके थ्रू भेजेगा? कोई बस चाहिए ना, तो वो डेटा बस के थ्रू मुझे भेज दिया. फाइल ओपन हो गया, मैंने फाइल में एडिटिंग किया, अब मुझे वो फाइल सेव करनी, और वो डेटा भी मुझे नेक्स्ट टाइम वापस चाहिए. तो वो सेव करते टाइम वो वापस वो स्टोरेज में जाएगा ना, हार्ड डिस्क में जाएगा, तो उसको कोई तो ट्रांसपोर्ट का मीडियम चाहिए. अगर वो बस बाय डायरेक्शनल नहीं रही तो क्या मैं भेजती हूँ, वो जाएगा क्या? वहां पे नहीं जाएगा. इसीलिए हमेशा याद रखना, डेटा बस इज बाय डायरेक्शनल. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एड्रेस बस, मैंने ये टर्म बोला ना बीच में कि प्रोसेसर ने वो मेमोरी लोकेशन दे दिया हार्ड डिस्क को कि ये ओपन करके दे दो, तो वो क्या हो गया? दैट इज एड्रेस बस का काम. कि एड्रेस बस प्रोसेसर के पास वो एड्रेस लेके जाता है जो हार्ड डिस्क में जाके वो फाइल ओपन करती है. तो उस एड्रेस बस को बाय डायरेक्शन होना जरूरी है क्या? क्योंकि एड्रेस का काम कौन डील कर रहा है? सिर्फ प्रोसेसर. यूजर डील कर रहा है क्या? अगर मैं आपको मेरे स्क्रीन पे कुछ ऐसा लिख के दिखा दूं, सपोज इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस 0xFEDD4, ये ऐसे मेमोरी लोकेशन ऐसे डिस्प्ले होते हैं आइडियली. तो अगर ऐसा डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे तो मेरे कुछ काम का है, मुझे कुछ समझने वाला है. सो दैट्स द रीजन एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल. So I'll ask you again, data bus is which direction? And now you know why does it work bidirectional? Okay, and address bus is unidirectional, क्योंकि आपका जो भी एड्रेसेस है उससे डील करने का काम सिर्फ प्रोसेसर का. नो अदर कंपोनेंट हैज टू बी इन्वॉल्वड इन इट. सो देन इट्स ओके, नो, व्हाई द एड्रेस बस? क्योंकि वापस यूजर को एड्रेस नहीं बताने वाला है, चलो ये एड्रेस पे सेंड करो. द यूजर, आर यू गोइंग टू टाइप एनी सच एड्रेस, मेमोरी लोकेशन एंड टेल कि इस एड्रेस पे भेज दो या स्टोर कर दो? यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. दैट्स व्हाई इट इज unidirectional. Is that clear? So I want you to quickly note down 3 buses in the system. Online, I hope even you are with me, and please note down this 3 buses in the computer system. First one, you can write data bus and just put a dash or a hyphen and write bidirectional. Data bus bidirectional. Second bus you can write, which is the second bus? Address bus. What's the direction? Unidirectional. And you know now why it is unidirectional. Okay, and the last bus we talk about is your control bus. ठीक है, now control bus as the name says, अभी आप सिंपल लॉजिक समझो कि आपके सीपीयू में जो पावर सप्लाई जा रहा है, तो पावर सप्लाई हर एक कंपोनेंट पे जा रहा है. आप कभी मदरबोर्ड देखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स रहते हैं, रेजिस्टर्स रहते हैं, हर एक को छोटा छोटा इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए. ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं. सिस्टम सपोर्ट सिस्टम है, ऐसा समझो कंप्यूटर का या प्रोसेसर. तो हर एक कंपोनेंट ना कुछ अभी दिस डॉक्यूमेंट इज ओपन, इट इज ओपन, आई एम नॉट एडिटिंग. So can, if I ask you, it is in which mode? It is in read mode or write mode? So it is in read mode. So this signal has to go to the processor that it is currently in which mode? Read. Suppose I start typing something in this, so it switches to read as well as write.
because it is open also, no? Not only writing. Okay, so it switches to which mode? Read as well as write. तो ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि बेसिकली हर एक कंपोनेंट फिलहाल क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है. ठीक है, अभी उसमें भी ना कैटेगरी आता है. आपने कितनी बसेस पढ़ी फिलहाल? 2. तो आइदर इट इज रीडिंग डेटा और राइटिंग डेटा, एंड आइदर द सीपीयू इज रीडिंग द एड्रेस और राइटिंग द एड्रेस. ओके, सो रीड डेटा, रीड एड्रेस, राइट एड्रेस, इंस्ट्रक्शंस, रीडिंग. तो ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स है जो कंप्यूटर को, सीपीयू को बताते हैं कि उसके सारे कंपोनेंट्स फिलहाल कर क्या रहे. ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि सीपीयू हर जगह पहुंच नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए. पर हर एक डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है ये तो पता रहना चाहिए ना. So that who will tell? This control bus will tell. So whatever controlling signals are required. Now एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. मेरा ये स्क्रीन ऑन है एंड इट्स माय डेस्कटॉप और लैपटॉप व्हाटएवर. सो समझो कि एंटी, मैंने पेन ड्राइव अटैच किया एंड इट वाज हैविंग सम काइंड ऑफ वायरस. सो फटाक से इफ यू सी दैट देयर इज अ पॉपअप व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, माय एंटीवायरस विल टेल me that you need to perform some kind of quarantine action on this particular file or folder. So that is called as an interrupt. What it is called as? Interrupt. He came, no, abhi beech mein, can I collect the IDs? What was that? Interrupt. Same is with the system. ठीक है, तो अभी सिस्टम को इंटरप्ट कर दिया. अभी इंटरप्ट में भी ना 2 कैटेगरीज आती है, हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी. अभी टेकिंग अटेंडेंस वाज अ हाई प्रायोरिटी थिंग, so I couldn't tell him. But if he wanted to talk to me regarding something, I would say I'll talk to you later. So that is a low priority. Is that clear? तो ये सारे जो इंटरप्ट्स आते हैं सिस्टम में, उसको कौन हैंडल करता है? आपका कंट्रोल यूनिट हैंडल. दैट मीन्स योर कंट्रोल बस. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आप ये डायग्राम में जो देखेंगे ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बस. बस की कितनी कैटेगरीज देखी? माय एमसीक्यू हैज 2 ऑप्शंस, 3 और 4. बस की कितनी कैटेगरी देखी? 3. विच आर दोस 3? डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल. डेटा बस क्या करता है? बाय डायरेक्शन, मतलब डेटा स्टोर या कैरी करने का काम करेगा. ठीक है, आइदर फ्रॉम द प्रोसेसर टू मेमोरी और मेमोरी टू प्रोसेसर. एड्रेस बस क्या करेगा? यूनिडायरेक्शनल, प्रोसेसर टू मेमोरी एड्रेस कैरी करेगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? एंड फाइनली कंट्रोल बस क्या करेगा? हाँ, मतलब सारे कंट्रोलिंग सिग्नल्स, जितने भी कंट्रोलिंग सिग्नल्स है कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट्स को लगते हैं, वो कैरी करेगा. तो वो कंट्रोल बस बेसिकली किसके पास है? कंट्रोल यूनिट. एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है? आई टोल्ड यू, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरप्ट. If the interrupt is high priority, all the components are said that you freeze. This has to be serviced first. ठीक है, सिंपल एग्जांपल जो मैंने एंटीवायरस का दिया, वो हाई प्रायोरिटी हो गया ना, क्योंकि सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, उससे सिस्टम का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है. बट सपोज अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि विंडोज अपडेट आया, तो अपडेट तो लेटर भी कर सकते हैं ना, so that's a लो प्रायोरिटी. तो आज के बाद कभी भी विंडोज अपडेट देखोगे तो मुझे हमेशा याद करना कि मैम ने बोला था ये लो प्रायोरिटी है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं. बट अगर कभी एंटीवायरस अपडेट ना करे, आ जाए कि एंटीवायरस आपका बता रहा है कि ये फाइल अब करप्टेड है, तो तभी भी मुझे याद करना, क्या बोलना, मैम ने बोला था ये प्रोसेस हाई प्रायोरिटी, इसको फिलहाल सर्विस करना पड़ेगा. अगर इसको स्किप कर दिया तो सिस्टम का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाए. Is that clear? So now you know what does arithmetic logic unit do? All the arithmetic and logical calculations. अरे arithmetic में कौन सा है? arithmetic calculations? Add, subtract, multiply, divide, modulus. ठीक है, एंड लॉजिकल में सिर्फ नाम याद रखो, एंड, कैपिटल एंड, एंड, और, नॉट, नॉर, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस है. ठीक है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम करता है. कंट्रोल यूनिट sends all the controlling signals to all the components of your computer, and that is done by which bus? Which bus? Control bus. किसी ने पूछा नहीं उसका डायरेक्शन क्या है? That means you know उसका डायरेक्शन क्या है? कंट्रोल बस का डायरेक्शन, yes, by direction. ठीक है, is that clear? So write down that also. Online, I hope even you are listening and noting down control bus. Please write the direction as by direction. And it sends what? All the controlling signals to the components of your computer system. Okay, now I'll take you to the last, at least in this, the last block, that is memory. Now I'll tell you the difference in primary and secondary.
So your memory is basically of two types: primary memory, secondary memory. Now I'll come to primary first. Primary में आता है आपका RAM, जो आपको पता रहेगा. And have you heard about ROM? सुना है कभी? वो सेकेंडरी. मैं ROM पूछ रही हूँ, ROM. You're correct, but it's coming in secondary. I'm talking about primary. Now primary memory comes of two types. First is RAM, second is ROM. I'll take you to RAM first. RAM का full form तो पता रहेगा ना, क्योंकि you use this, so you must be knowing. Do you know what's the full form? Last, it's random access memory. So now कितने यहाँ पे applications दिख रहे हैं आपको? If you can see, I mean online also can see. How many applications you think are currently open? 1, 2, 3, 4, 5. So around 5 applications are currently open. All of these applications you think are where? In the hard disk or in the RAM? कभी सोचा है? क्योंकि सिस्टम में आप मदरबोर्ड पे रैम भी लगाते हो, फिर आप हार्ड डिस्क देखिए कभी हार्ड डिस्क कैसी रहती है. इट्स लाइक अ स्क्वायर बॉक्स काइंड ऑफ. मेरे पास है, मैं लेके आऊंगी जब आपको मेमोरी इन डिटेल पढ़ाऊंगी, तभी इंटरनल दिखाऊंगी कैसे दिखता है हार्ड डिस्क. ठीक है. सो योर रैम, always remember, whenever wherever you go, in case you don't pursue also CS, but always remember, RAM consists of only those processes which are currently being executed. अभी ये प्रोसेस जो मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है, अज्यूम करो उसको कितना एमबी चाहिए, इसे 5 एमबी. मेरा रैम अज्यूम करो 8 जीबी का है, तो 8 जीबी में से कितना ले लिया इसने? 5 एमबी. ठीक है. देन सपोज मेरा ये सेंसस बोर्ड है, उसको से 20 एमबी चाहिए, तो उसने वो उसमें से कितना ले लिया? 8 जीबी में से 5 तो ऑलरेडी गया, प्लस 20 मीन्स 20 प्लस 25. फिर सपोज बाकी के भी उतने 5 करके, तो अज्यूम 5 ठीक है. तो उतना उसने ले लिया, हर एक को 5 एमबी चाहिए, तो 25 एमबी 5 जीबी में से ऑक्यूपाई हो गए. सो दैट्स योर रैम. इसलिए आपने कभी सोचा है कि आपका रैम, आपका सिस्टम, आप कुछ डबल क्लिक करते हो, बहुत स्लो रिस्पॉन्स देता है? दैट्स बिकॉज यू हैव एनी एप्लीकेशन जिसका सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और वो अभी रन हो रहा है, तो रैम पूरा फुल हो गया. अभी रैम फुल हो गया तो सिस्टम बेचारा थोड़ा वर्चुअल मेमोरी की तरफ जाएगा. वर्चुअल मतलब वो रहता है हार्ड डिस्क में, बट ऐसे बताता है कि somebody who is not staying in लोखंड वाला, बट दिखाता है कि मैं लोखंड वाला में, लाइक गॉट इट दैट वे. तो रहता मेमोरी हार्ड डिस्क का है, बट वो सिस्टम को कैसे प्रेडिक्ट दिखाता है कि आई एम करंटली अ रैम मेमोरी लोकेशन. ठीक है. सो वील कम टू दैट लेटर. सो यू अंडरस्टूड व्हाट रैम कंसिस्ट ऑफ. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस. प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इतना समझ लो, कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन कर दी, वो एक प्रोसेस हो गया सिस्टम के लिए. ठीक है. आपके लिए आपने अभी फिलहाल वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, बट सिस्टम के लिए वो एक प्रोसेस है. ठीक है. सो जो भी प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूटिंग है, वो कहाँ पे है? आपके रैम के अंदर. एंड रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ रैम हैज टू टाइप्स, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक. आई विल नॉट टेक यू इन डिटेल फिलहाल, क्योंकि उनके डिफरेंस में इतना ही है कि एक कैपेसिटर्स यूज करता है, एक थोड़ा सा बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप्स यूज करता है. सो यू डोंट हैव टू नो दैट, जस्ट नो दैट टू नेम्स. कि रैम में दो टाइप आएंगे, कौन सी? स्टैटिक और डायनामिक. Is that clear? Now, coming back to the next type of memory, which is again primary, is ROM. So you told me that OS is the heart, right? OS is the heart, which is where in the processor. But processor खुद एक memory नहीं, उसके पास एक memory है जो OS रखता है. That is your ROM. Now, say I tell you one thing. RAM जो है ना, ये मेरा screen on है, मैंने अभी बंद कर दिया. अब मैं वापस ऑन करती हूँ, तो ये सारे जो प्रोसेसेस 5 चालू थे, वो चालू रहेंगे क्या? दे आर ऑल स्टिल वर्किंग? यस और नो? माय 5 प्रोसेसेस आर ऑन, राइट? आपने बताया 4-5 चालू है, मैंने यहाँ से बटन दबा दिया, फिर वापस चालू किया, मतलब सिस्टम बूट हुआ. ठीक है. सिस्टम बूट होने के बाद वापस ये 5 मेरा ही वेट कर रहे हैं कि हाँ अभी अंकिता मैडम आएंगे और वापस चालू करेंगे. इज इट? नो. आई हैव टू अगेन गो टू देम वन बाय वन. आई हैव टू अगेन ओपन देम one by one. So that's the reason I say that RAM is a volatile memory. Volatile means what? Power of content gone. आपने कंप्यूटर 4 घंटे यूज किया, 4 घंटे में जितने प्रोसेसेस चालू थे, जितना मेमोरी रैम को लेना था उसने लिया. द मोमेंट यू टर्न इट ऑफ, रैम खाली हो जाता है. इसलिए आप जब वापस चालू करते हो तो थोड़ा फास्ट रहता है,
फिर जैसे जैसे एप्लीकेशंस बढ़ गए वैसे वैसे रैम का स्पीड स्लो, समझा? एंड दूसरा मेमोरी है जिसको बोलते हैं रोम, एंड रोम का फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी। दैट मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग विथ इट, एंड दैट रोम स्टोर्स योर ओएस एंड योर बायोस सेटअप। बायोस मीन्स मैंने सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि आप पावर ऑन करते हैं तो एक लाइट फ्लिकर होती है हर एक कंपोनेंट की। ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट, दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो वो ये सब काम कौन करता है? आपका रोम करता है। तो अगर मैंने अभी अभी सपोज मैंने फ्रेश कंप्यूटर लिया है, मैंने अभी चालू किया, बस 2 घंटा यूज किया, बंद कर दिया, एंड अगर रोम वोलाटाइल रहता तो मेरा ओएस उड़ जाता ना, बायोस ही उड़ जाता। इसलिए रोम को वोलाटाइल नहीं रखते, उसको नॉन वोलाटाइल। इज दैट क्लियर? इसलिए आप जितनी भी बार सिस्टम को ऑन करो, उसका जो भी सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स द ओएस एंड द बायोस एंड द पोस्ट, वो रन होगा। दैट इज व्हाई रोम, द क्वेश्चन, द नेम इटसेल्फ सेज रीड ओनली memory. That means the system will read it n number of times, but RAM is randomly accessing memory. You now it will randomly use the RAM, power off, everything is gone. But in ROM, it's not the case. If you turn off the power, you are doing something, your mother is cleaning, she switches off the button, and then when it turns on, the system turns on, right? Then you again open your applications. So how is that possible? Because it is a ROM memory, random read only memory. Is that clear? So I want you to note down memory unit. It has two types. Online, I hope even you are noting down memory units of two types. First, we'll write the category of primary memory. Primary memory. And just write first one. In primary, write RAM. What's the full form for RAM? Random access memory. And I want you to write this, that it stores what? Currently executing processes. RAM stores what? Currently executing processes. Done? Okay, it is volatile, non-volatile? Volatile. Volatile का मतलब क्या? If the power is turned off, the content inside the RAM is cleared off. Okay, you can just write the keyword volatile. Done? Okay, next, second type of primary memory we've done. अभी RAM का types भी note down कर दो चाहिए तो, right? DRAM, that's dynamic RAM. DRAM, dynamic RAM online, please note it down. DRAM, dynamic RAM, and SRAM is static RAM. So for time being, I just want you to know the names, not go in much depth. DRAM, dynamic RAM, SRAM, that's static RAM. Done? Okay. So that was the first category of primary memory. Now second, read only memory. Please write down the second one, ROM. I hope you guys are understanding. If not, then you are always free online. Even you can interrupt. There's definitely not a problem. Okay. ROM, read only memory. Now what does the ROM store? OS, BIOS. So I wanted to write BIOS is basic input output system. तो ये सारे सेटअप जो भी है, जो कंप्यूटर को बूट अप करने के लिए लगते हैं, कौन रखेगा? रॉम रखेगा। इसीलिए तो उसको नॉन वोलाटाइल रखा है ना। अगर वो वोलाटाइल हो गया तो 36-40,000 इन पानी, कि एक बार सिस्टम यूज किया फिर बंद, अभी चालू ही नहीं हो रहा है। सो राइट, रॉम रीड ओनली मेमोरी यू रोट. Okay, write that it consists of OS, comma BIOS. If you want to write the full form, you can write basic input output system. It is a setup basically. Basic input output system, BIOS, BIOS, all capital. Okay. Online, I hope even you are writing. Since I don't know your names and all, but still. Okay. And then you can even write post, capital POST, that is power on self test. Capital POST,
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है? हेलो मैम। यस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. मैम वी कैन राइट हियर नॉन volatile, Yeah, right? it's a non-volatile memory. Yeah, yes, of course. Yeah, it stores all this. Data goes in the secondary. अभी ये सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी का दो पार्ट है, एक रैम है और एक रोम है. सी आई रिपीट अगेन, मेमोरी के दो सेक्शंस है, प्राइमरी है एक सेकेंडरी है. तो फिलहाल हम सिर्फ प्राइमरी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? प्राइमरी की बात करेंगे तो उसमें दो कैटेगरी आती है, एक रैम और एक रोम. ओके, रैम के दो टाइप्स देखे, स्टैटिक एंड डायनामिक. नाउ वी कम टू द रोम टाइप्स. सो रोम में तीन टाइप्स है. नाउ आई जस्ट से द नेम. ओके, PROM, EPROM and EEPROM. बोला उतना पहले लिखना है. I will tell you to write. First listen to me. Now what does this PROM say? Everything has a generation coming. Okay, like computers also, first generation, second generation करके it is come. Okay, so PROM means what? PROM says programmable ROM. ROM का full form you know, read only memory. Now why it is programmable? The reason is that when it is manufactured as an empty ROM, so that it allows the user like you and me to put my data. अभी मैंने कोई सिस्टम लिखा है तो मुझे उसको रन करना है, तो वो मैन्युफैक्चर करता है उसको एज एन एम्प्टी चिप. तो उसके अंदर जो भी कोड लिखना है, जो भी प्रोग्राम लिखना है, वो मैं खुद लिखूंगी. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल रॉम. बट इसका एक ड्रॉबैक है कि एक बार आपने लिख लिया, सो यू कैन नॉट एडिट इट. सपोज सी सिस्टम ओएस अपडेट आती रहती है ना फोन में, व्हाट्सएप भी अपडेट आता रहता है. हर एक एप्लीकेशन फोन में आफ्टर एवरी वीक, probably in a day or two, you'll find some update. That update will be either supporting security features or supporting UI features. ठीक है? तो हर एक ये मेमोरी में भी अपडेट आई थी. तो अभी सपोज अभी अपडेट आ गया, बट एक प्रोग्रामेबल रॉम करके जो चिप है, दैट चिप कैन नॉट बी एडिटेड. सो इज इट ऑफ एनी यूज? नाउ आई वांट टू राइट मेक सम चेंजेस अगेन. तो मैंने प्रोग्राम में चेंज कर दिया, बट मैं उसमें लोड नहीं कर सकती, तो मुझे वापस दूसरा रॉम खरीदना पड़ेगा, PROM खरीदना पड़ेगा. ठीक है? सो टू ओवरकम दिस, there was a second generation that came up, which is called as electrically erasable programmable read-only memory. So this is the third generation probably. Second generation is erasable memory. तो erasable ROM, that is EPROM. Erasable मतलब क्या कि अभी आप इसमें डेटा इरेज कर सकते हैं, बट कैसे? You don't have a eraser which you helps you to erase the data. इसमें कैसे इरेजर था मेरे सेंसस बोर्ड पे, वैसे इरेजर नहीं रहता. So that time what they used to do is they used to take that chip and expose it to either natural or artificial UV lights. तो अगर सपोज मुझे डेटा बर्न करना है, मेरे चिप का इरेज करना है, तो मुझे उनको देना पड़ता था. तो उसके लिए चिप निकालो कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है? उसको निकालने के बाद यू सबमिट इट, यू गिव इट टू दैट पर्सन हूसोएवर विल डू. फिर वो आइदर आर्टिफिशियल यूवी लाइट उस पर प्रोजेक्ट करेगा या फिर नेचुरल यूवी लाइट में रखेगा. बट इसमें एक प्रॉब्लम होता था कि 100% डेटा इरेज नहीं होता था. ठीक है? अभी सपोज मैंने बोला कि मुझे पूरा पूरा इरेज चाहिए, बट समवेयर इट विल नॉट प्रोबेबली इरेज ऑल द 100% डेटा, which makes that particular chip useless, like it's not of any use later. So and again this overhead, क्योंकि मुझे मेरा काम तो चालू है, मुझे ये डेटा immediately erase करके चाहिए था, but he said that he will give me in working 4-5 days. So how is it going to help? I'll have to wait for those 4-5 days. So again the third generation came up, which says it is electrically erasable, that is EEPROM. So electrical means what? First thing is कि उसको कंप्यूटर से निकालना नहीं है, उसको अंदर ही रखना है. ठीक है? सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर इंटरफेस रहेगा, जैसे कोई भी एक एप्लीकेशन बना रहेगा, जो जैसे आप सीडी बर्न करते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम में, कभी किया है? सीडी को राइट करते हैं तो उसका एक बर्न करके ऑप्शन आता है. दैट मीन्स व्हाट, यू आर राइटिंग द कोड इन दैट, यू आर पेस्टिंग द डेटा इन द सीडी. सो ये सारा कुछ इलेक्ट्रिकली हो जाता है. स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस एंड द डेटा इज इरेज्ड. एंड सिलेक्टिव डेटा भी इरेज हो सकता है. सो दिस इज हाउ द जनरेशन ऑफ रॉम इज कमिंग फ्रॉम. पहले प्रोग्रामेबल था, मैन्युफैक्चर होता था एम्प्टी, मतलब नॉर्मल प्रोग्राम्ड में रॉम भी मिलता था और एम्प्टी रॉम भी मिलता था. फिर उसमें प्रॉब्लम हो गया कि उसका डेटा इरेज नहीं हो सकता, तो उसने इरेजेबल रॉम जनरेट किया.
फिर इरेजेबल रोम में प्रॉब्लम क्या होता था कि वो ओवरहेड था कि यूवी लाइट्स एक्सपोज करो, उसको डिटैच करो, सब करो. सो सॉरी. Then what did it do? It came up to electrically erasable. So now you know the name starts from PROM is programmable ROM, EPROM is erasable programmable ROM, and last EEPROM is electrically erasable programmable ROM. Is that clear? So we'll just quickly list down. You wrote about, right? ROM का लिख दिया online. I hope even you have written. So we'll just list down the types. So ROM, first type, right? PROM. Everything in capital, huh? PROM. What's the name? PROM, programmable read-only memory. Second, you can write EPROM, that is erasable, programmable read-only memory. Awake, no? Not sleepy, no? Done? EPROM. And last, you'll write EE memory. Such big names, no? But you can always write electrically erasable PROM. For you, it is a concession, not for the science students. Done? Okay. So maybe you will have it in MCQs. Electrically erasable, programmable, read-only memory. Okay, so you might have in the MCQs, so they'll give you options. So you have to type कौन सा type है, कौन सा type नहीं है. So please don't. अगर पूछा है कौन सा type नहीं है, तो इन तीनों में से किसी को select मत करना. ये उसके types हैं. And अगर ऐसा पूछा है कि कौन सा type है, तो तीनों में से जो भी एक available रहेगा option में उसको select कर दे. Is that clear? Okay. So that's now this is the wind up of your primary memory. ठीक है. तो रैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी एक चीज बताती हूँ कि रैम का स्पीड मैंने जो आपको बोला कि मेरे पास 8 GB था. देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज एंड्रॉइड एक्लिप्स जो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने यूज किया जाता है. अभी वो पुराना हो गया. व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग तभी वो बहुत नया था एंड वी हैड कोर्सेज कमिंग अप फॉर दैट. सो दैट एंड्रॉइड एक्लिप्स का ना हर एक एप्लीकेशन का एक रिक्वायरमेंट रहता है. आप देखेंगे प्ले स्टोर पे वो बताता है कि उसको कितना रिक्वायरमेंट रहता है. ठीक है. तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट ही 4 GB था. मतलब वो 4 GB रैम चाहिए उसको रन करने. ठीक है. एंड माय लैपटॉप हैड ओनली 4 GB रैम बिकॉज मैंने तभी लिया एंड आई वाज जस्ट यूजिंग इट फॉर नॉर्मल पर्पस. देन व्हेन आई वांटेड टू मेक दोस एप्लीकेशंस इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट क्योंकि जैसे ही मैंने वो एंड्रॉइड एक्लिप्स ओपन किया बाकी सब कुछ इतना स्लो हो जाता था that I would literally take time to even minimize and navigate somewhere else. So what I did is I upgraded my RAM. It's available on Amazon, Flipkart, everywhere. If you go, you can later on check. You should know that कितने bits का आपका OS है. I mean आपका processor है 32 या 64. उस compatibility के हिसाब से आप आपका RAM upgrade कर सकते हैं. तो मैंने घर में कर दिया. आप घर पे मत करना. It's just that you have to open the case and the laptop case and just clean and then just fix it and BIOS में कुछ setups रहता है and then it is done. ठीक है. तो after I upgraded to 8 GB, what difference I found is even if I open an Android Eclipse, I could easily navigate. I could फटाफट मतलब response time system का fast था. ठीक है. अभी जब मैंने अपग्रेड नहीं किया था तो बहुत स्लो हो गया था. वो स्लो क्यों हुआ था मालूम है? क्योंकि रैम तो फुल हो गया. अभी जनरल डेफिनेशन क्या कहता है कि रनिंग प्रोसेसेस किस में रहते हैं? रैम. मैंने एंड्रॉइड भी ओपन किया, मैंने क्रोम भी ओपन किया, मैंने वर्ड भी ओपन किया. तो अभी एंड्रॉइड ने पूरा रैम ले लिया तो वो क्रोम और वर्ड जाएगा किधर? इट हैज टू गो समवेयर, नो? वरना तो वो वर्चुअल मेमोरी में जाता है. और वो वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे रहती है? तो आपके हार्ड डिस्क में. तो अगर मैं आपको सिर्फ वैसे डायग्राम से बताती हूँ कि अगर समझो कि ये आपका हार्ड डिस्क है. Suppose this is your hard disk. So some sort of memory locations are just designed to behave as if they are RAM. And they are activated only when your actual RAM goes full. Otherwise तो as a whole hard disk ही काम करेगा. But आपका actual RAM जब full हो जाता है तो बाकी के जो processes है जिसको run होने के लिए कहीं पे तो memory चाहिए because without memory कोई run नहीं होगा. Keep that thing in mind.
ठीक है, तो वो रन होने के लिए जो उनको मेमोरी चाहिए वो कहाँ से उठाएगा? हार्ड डिस्क। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल. इट इज नॉट physically present anywhere, but it is being used. Is that clear? So that's your virtual memory. So that's how we come to hard disk. Now hard disk is called as your secondary memory. क्योंकि वो क्या काम करता है? आपने एक पावर पॉइंट बनाया, आपने पेंट में कुछ सेव किया, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट सेव किया, यू आर सेविंग सम सॉन्ग्स, यू हैव सम डेटा, सम प्रोजेक्ट फाइल, एवरीथिंग इज वेयर हार्ड डिस्क. इसीलिए मैंने आपको जब पहले बताया ना कि मैंने ये फाइल सेव करी थी, इसको डबल क्लिक करके ओपन करी तो वो रिक्वेस्ट किसको गया? हार्ड डिस्क को गया कि यूजर ये मांग रहा है, उसको ओपन करके दे दो. इज दैट क्लियर? सो दैट्स योर सेकेंडरी मेमोरी. So whatever data you can say whatever data you are manipulating, whatever kind of data you are manipulating. Manipulating means you are either writing, reading, or you are making some kind of changes. Okay, और traversing का मतलब उसके go through करना उसको. ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग, ये सारे ऑपरेशंस कहाँ पे करेंगे? हार्ड डिस्क. इज दैट क्लियर? सो हार्ड डिस्क में दो आते हैं, HDD एंड SSD. तो हार्ड डिस्क ड्राइव एंड नो सॉलिड स्टेट ड्राइव. ओके, तो आपको ये जस्ट गो होम लेटर ऑन एंड दोनों को कंपेयर करना है Amazon पे. यू विल सी दैट SSD का थोड़ा प्राइस ज्यादा है. द रीजन इज व्हाई उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो बहुत फास्ट. यस, एंड HDD स्टैंडर्ड है, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड आपको जो प्राइस पे मिलता है मिल जाएगा, बट उसका रिस्पॉन्स टाइम भी फास्ट है. लाइक यू कैन से दोनों में 15 से 20 सेकंड का ही डिफरेंस रहेगा. बट तो भी फॉर अस व्हेन वी आर यूजिंग अ कंप्यूटर दैट 20 सेकंड्स आल्सो मेक अ डिफरेंस. आई एम वेरी इम्पेशेंट. मुझे क्लिक किया वैसे ओपन करके चाहिए. नहीं होता है तो मुझे इरिटेट होता है कि व्हाई इट इज टेकिंग सो लॉन्ग, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So for me, even in the phone, no, when you click something you want it to open, सिर्फ नहीं हुआ 2 सेकंड नहीं लगा कि नहीं हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, क्यों इतना टाइम लगा रहा है? Because we are impatient. But why we don't see from the fact that the response time the system is giving also matters. Okay, so दोनों में 20 से 30 seconds का difference रहेगा. Those 30 seconds also matter to us a lot. Okay, so that's your hard disk drive and solid state drive. So you'll just list down the secondary memory. Primary was your RAM and ROM. रैम के टाइप्स मुझे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो भी चलेगा. ऑनलाइन इवन यू कैन टेल मी, वी आर क्वाइट फार फ्रॉम मी. SRAM एंड EPROM. कौन बोला रैम के टाइप्स EPROM? मुझे नींद आ रही है यार. रैम के टाइप्स SRAM एंड DRAM. एंड ROM के टाइप्स PROM. ROM. Yes, EPROM and EEPROM. Yes, Yashika, right, dynamic. Okay, so for secondary we'll write hard disk. Secondary memory is a hard disk. Okay, secondary memory hard disk, and then you can write the types. Now if you want, what will you write for the definition in the hard disk? It stores all the data which is there in the computer system. Online even you can note down, stores all the data which is there in the computer system. Done? Stores all the data Which is there in the computer system. That means whatever the user stores it, user manipulates in the computer is stored where? In the hard disk. Okay, types you can write. Types HDD, that is a hard disk drive. Hard disk drive. And second you will write SSD, that is solid state drive. And in the bracket if you want you can write faster than HDD. Second one, solid state drive, faster than HDD. Okay. Now I tell you one more thing, just for knowledge purpose. Now recently I have my laptop, but I have a home desktop also. So my desktop stopped working, like it is not taking power. Later on I checked and I came to know that उसका SMPS चला गया था, जो power supply unit रहता है वो चला खराब हो गया था.
So I thought of, instead of using, replacing and spending money in that, I would connect my hard disk, because मेरा data hard disk में है. So now you know कि मैंने वो कैबिनेट को साइड में कर दिया कि ये मैं मेरे बच्चों के लिए आइडेंटिफिकेशन में यूज कर लूंगी. मैंने से उसमें से निकाला तो क्या निकाला? हार्ड डिस्क. सो अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसर दूसरा चल जाएगा, मेमोरी कनेक्ट हो सकती है. तो व्हेन आई ट्राइड कनेक्टिंग दैट हार्ड डिस्क विथ माय लैपटॉप, ऑफ कोर्स आई हैड सम केबल, ओके, एंड विद दैट केबल आई ट्राइड कनेक्टिंग, बट वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था. तो मेरे पास मेरे दूसरे लैपटॉप का एक छोटा सा हार्ड डिस्क था, क्योंकि साइज डिफरेंस होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू सी डेस्कटॉप्स आर लार्ज इनफ, your laptops are very compatible and very small, like portable kind. तो उनके components के size में भी difference आता है. I will again specify that size difference is only physical, not internal. अगर मैं आपको एक हार्ड डिस्क दिखाऊं कि सपोज ये 1 GB का है या 4 GB का हार्ड डिस्क है, तो वही 4 GB का हार्ड डिस्क लैपटॉप में इतना दिखेगा. कंटेंट इज, आई मीन द इनिशियल साइज इज सेम, फिजिकल डिफरेंस यू विल सी. Okay, so what I tried doing is I was connecting and it was not connected. कौन सा? डेस्कटॉप वाला हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं हो रहा था. फिर I tried connecting the laptop hard disk, वो फटाक से कनेक्ट हो गया. Then later on I understood कि हार्ड डिस्क जो मेरा डेस्कटॉप का था उसको 12 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स दोनों पावर सप्लाई चाहिए, जबकि लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क था वो 5 वोल्ट्स में भी काम कर रहा था. सो नाउ यू नो कि सिर्फ आप कनेक्ट करके वायर लगा के काम नहीं चलता है. सिस्टम में मेमोरी, बाइनरी, हेक्साडेसिमल के अलावा वोल्टेज रिक्वायरमेंट भी रहता है. दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस. ठीक है, आप जबरदस्ती उसको बोलेंगे नहीं तो 5 वोल्ट पे ही काम कर दो, बोलेगा नहीं मेरे को 12 चाहिए, मैं 12 ही लूंगा. Understanding? Then when I connected that hard disk to some desktop, it got connected. I got my data. Understanding? So keep this thing also in mind that voltage also matters. The electrical difference which it requires in order to communicate with the components also matters. Is that clear? So that's all about your memory. Last I come to these two. ये तो आप ही बताएंगे यार मुझे. नाम से ही समझता है, input, output. Online even you can tell me what do you mean by input? हाँ, तो जनरलाइज डेफिनेशन कैसे जाएगा इनपुट का? हाउ डू वी से दैट समथिंग दैट गिव्स इंफॉर्मेशन or feeds information into the computer system, okay, and something that processes that information and generates the output. So the one which is feeding is called as, and the one which is processing and processing is your, and one which is generating and the output is output unit. So अगर इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे तो कौन से इनपुट डिवाइसेस है? यू कैन लिस्ट डाउन. कीबोर्ड, माउस, देन कैमरा इनपुट है. ओके, देन यस, कीबोर्ड, माउस, देन कैमरा, दैट्स इट. प्रिंटर, प्रिंटर इज आउटपुट. तो व्हाट इज इनपुट? दैट्स अ पेरिफेरल. माइक, देन स्कैनर. सुना है स्कैनर? वो जेरोक्स मशीन में क्या करता है, वैसा पेपर रखता है, ढक्कन रखता है. स्कैनर वैसा ही रहता है. स्कैनर में भी बहुत सारे टाइप है. यू गो टू द मॉल्स, हैंड हेल्ड स्कैनर्स रहते हैं ना, आपने देखा रहेगा ऐसे, and it just scans the barcode. That's called handheld because you hold it in the hand and you're scanning. Then flat bed means वो थोड़ा printer जैसा दिखता है, उसका flat surface रहता है glass का, and then you just put the paper, close the cover, and then it scans. अभी वो अंदर कैसे स्कैनिंग सिखाता है उसके लिए तो आपको साइंस लेना पड़ता था. लॉन्ग प्रोसीजर टू टेल. ओके, सो ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं. एंड अभी सपोज एज आई टोल्ड यू दैट कैलकुलेटर में आई वाज डूइंग 5 + 3. So for providing that 5 + and 3, I had the keyboard, right? On the calculator, I had the keyboard. And then I provided, the system processed it. Who processed it? This entire unit processed. And then who generated the output? The screen. So in your computer system, your monitor is the output device. Then printer is the output device. Then what else can be? Speakers, output devices. Very good. Projectors, they are output devices. So these are the devices which will generate the output. Okay, so this is the entire structure of your CPU. देखो इतना सा डायग्राम है, but कितना वास्ट है. Okay, of course if you keep revising this you will remember the terms. Anything else left? So input output devices, you can just write down the definition online, even you can note down. Input you can write provides information into the computer system. Ma'am, feeding information.
Yeah, anything is fine. Feeds information or provides information to the computer system. Okay. Output, output you can write. It displays the calculated result of the input. Now it is not necessary always plus minus. I'm telling it in general. Displays the calculated result of the input. उसके नीचे ना last, I mean probably the next line, not a part of this, but I wanted to write 3 words. Just write down fetch, F-E-T-C-H, fetch, decode, D-E-C-O-D-E, decode, and execute. Fetch, decode, execute. Online, I hope even you are writing fetch, decode, and execute. Now, the entire system, no, it works on these 3 stages. उसने fetch किया, decode किया, execute. Is that clear? You have a next topic which we'll go in detail on that, but I just wanted you to know fetching from the input device, decoding, that means understanding what conversion is required, what manipulation may modify, delete, insert anything, and lastly, execute. That is displaying the output. Is that clear? Okay. So now online, I think even you have these worksheets. If not, then I'll just check whether they have shared it with you or not. Okay. So I'll share these worksheets with you. We'll just solve them. Okay, so online I've just shared those worksheets for computers. So I think we'll start with computers first. Computer basic worksheets. Okay. So we'll just go through all the questions, discuss them, and mark the answers. Okay. So very Okay. first, yeah. So very first is a process is a. I just told you that. You tell me what can be the answer. You don't have the worksheet. You can go and get it from downstairs. Yeah, you can get. I'll wait for you. Just tell him that I need the worksheets, and just tell him that ma'am has said that share the test papers with online. Yeah. So पहला वाला तो आंसर करो. A process is a, read the options. Worksheet, computer basics. A process is a single thread of execution, program in the memory or task. A, B, C, D. Which one? How many of you say first one? Second one? इधर ये पेन को हाँ okay. Third one? Second one? So you're correct. Process is a, she's always right, you know. So yeah, like irrespective of even if she's wrong, you have to say she's right. Okay? Yeah, correct. So it's the process, program is a process in execution.
Online, I hope even you are marking. Second one, right? A smallest unit of information. Second one. Bit means how many? 1. Either it is 0 or it is 1. Okay? Nibble means how many bits? And byte means 16 क्यों नहीं? तो 2 bytes हो जाएगा. Good. मतलब कितना? हाँ, 1.5 per something. So you are understanding. Good. How many colors dots make up? Now I'll take you to this board and I think I'll. Ma'am, Yeah. Tell me. byte, I'm listening. it is the reply of byte, right? Second one. Um, a bit better, not byte, a bit. Okay, ma'am. Okay. Yeah. So how many colors does a dot form? Now you know your monitor. Which device it is, input or output? Output device. So that output device, that monitor is made up of a word. Do you know it is called as a pixel? अब बोलते pixelerate हो गया है बहुत. हम सिर्फ ये words use करते हैं, but do you know the actual meaning? Pixel means a single dot. Now this particular dot is made up of 3 colors, and that's R, G, B. Red, green, blue. Is that clear? So don't forget how many colors that particular pixel dot make. So what can be the answer? The last one. If you want, you write it with the pencil 3. over there. RGB. Yeah, it's 3. Correct. Just write RGB. Okay. Next we write which of the following is the extension of notepad. अभी ये see generalized question आएंगे एग्जाम में. आप ऐसे बोलेंगे मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, ये क्या आ गया, ये तो बोली ही नहीं थी. Not like that. It's a 15 marks paper. What I am trying to deliver is the entire knowledge of what a computer system is. Now, if they are very lenient and loving to you, then they will ask you some silly questions. So this is one of them. Use किया है notepad कभी? क्या रहता है extension? नहीं यार, .doc नो. वो किसका रहता है .doc? Word. So that's correct. Your notepad has a text because it is. आप उसमें images डाल सकते हैं. It's only text. That is why it is .txt. Is that clear? Next is, now who developed the basic architecture of computer? Don't look at me. Make wild guesses. See, I think the paper is for 90 minutes if I'm not wrong. And you have 100 questions. So you don't even have a minute for a question. Yeah, so generally around 50 to 60-second max, you can stay on one question. So the answer is mark option number C. That's John von Neumann. वो जो architecture बताया ना, उससे थोड़ा और बड़ा एक architecture है जिसको von Neumann architecture बोला जाता है. So that's why von Neumann means he is the one who designed it. So John von Neumann is the answer. Okay. Sixth one, online, I hope even you are with me. Sixth one, which of the following allows simultaneous read and write operations? Read and write, huh? Read and write. मैं अभी भी बोल रही हूँ. It is read and write. ROM writing करता है. ROM नाम बेचारा क्या है, उसके नाम को तो सोचो. It is read only. So is the ROM going to do any kind of writing? तो बचा क्या उसमें? हैं? RAM. नहीं, ROM है यार. Yeah, online, what did you say? RAM. Yeah, correct. Very good. You people should also answer now. ROM means what? Read only. So is there any sort of writing going to happen? Not at the system level. User level नहीं पूछ रही मैं, system level पूछ रही हूँ. तो बचा क्या उसमें? RAM. वो आपको reading and writing दोनों करने देता है ना. ये क्या है ये? मेरा word document open है. I'm reading. I'm typing. It is writing. And where it is currently inside whom? RAM or ROM? RAM. Is that clear? Next one, write down. Which of the following is not considered as a peripheral? Peripheral का मतलब devices which are connected externally. So which is not a peripheral devices? Keyboard connect होता है, monitor भी connect होता है, CPU connect. CPU. Yeah, so the answer is CPU. CPU is not a peripheral; it is itself a computer system. Okay. Yes, very good. Online. Which of the following computer memory is fastest? Now इसमें से मैंने आपको RAM और hard disk की बताया. But आंसर उन दोनों में से एक भी नहीं. नो.
The fastest is register. See, मेमोरी स्ट्रक्चर है ये, तो मैंने जो आपको मेमोरी यूनिट से बताया ना, दैट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो जनरलाइज रहता है. बट अगर आप कोई भी मेमोरी को सिस्टम लेवल पे देखेंगे, of course again I'll say that it's for standard 12 who take science, they design they program processor. तो प्रोसेसर को प्रोग्राम करते टाइम में उसका डेटा कहीं पे, अभी मुझे ऐड करना है, जैसे मैंने बोला 5 and 2, तो 5 और 2 कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट मेरे पास अवेलेबल है, वो है रजिस्टर. सो 8085 में रजिस्टर्स है जो 8 बिट के हैं, उनका नाम ऐसे है ABCDE, इस फ्लैग, सो आई डोंट टेक H&N. तो ये सारे वो रजिस्टर्स है जिसकी साइज, अभी 8085 मेरा 8 बिट का रजिस्टर प्रोसेसर है, तो उसका मेमोरी भी 8 बिट का है, हर एक 8 बिट का है. बट नाउ सपोज यू विल टेल मी कि मैम अगर 16 बिट लोड करना है, तो हमेशा याद रखना आपका जो मेमोरी एड्रेस रहता है ना, इट कम्स फॉर 16, मतलब मोर देन दैट. ठीक है, तो 8 बिट का प्रोसेसर 16 बिट एड्रेस कैसे हैंडल करेगा? तो उसको मेमोरी भी 16 बिट का चाहिए ना, तो 8085 ना उसको पेयर में यूज करता है. इनमें ऑलरेडी पेयरिंग हो गया है, मैम तो having उसमें भी वैलिड पेयर, या जस्ट वैलिड pairs है BC, DE and HL. So now if I add 8 plus 8, does it make 16? Then can I store my memory over there? That is how the system works. Yes, tell me. ma'am actually you No told doubt that online. Yeah. ma'am actually you told that SSD means solid disk drive has the faster than No, HDD see, na that hard is disk that is drive. in, yeah, it is faster than HDD. But when you talk about in the computer system, and you cannot see anywhere no SSD in the option, so the smallest here it is not asking. It's the smallest and the fastest is your register. Okay, if you find SSD in the option, the question will be something else. Okay. Okay ma'am. Challenge, but I have it. Okay, so next one we'll see which of the following operations is performed by ALU. Now tell me. ALU का full form क्या था? Arithmetic Logic Unit. Fine. अभी इसमें से क्या करता है वो बताओ. Take your time. How many of you say option A? Somebody said okay. Online you're correct. 3 ma'am. Yeah, no. A, option A, option B, option C. Data manipulation. Only that's it. Option D. Arithmetic as well as logical. तो मैन्युपुलेशन, एडिशन, ये वो सारे ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगा ना. सो व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन? लास्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ऑनलाइन प्लीज मेक अ नोट. Okay, so which of the following format is used to store data? Now you will see उधर decimal है, octal है, hexadecimal है, but data किस format में store होता है पता है? BCD, that is binary coded decimal, that is 0 to 9. समझा? क्योंकि आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो उसका एक कोड बनता है, दैट्स कॉल्ड अ बीसीडी कोड. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज बीसीडी. Next is which of the following memory of the computer is used to speed up the computer processing? Speed up. Don't get confused in RAM. No. RAM जितना ज्यादा रहेगा उतना तो वो स्पीड करने ही वाला है, बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कैशे और सैशे मेमोरी, जो आपके फोन में भी रहता है. सो व्हाट्स दैट कैश मेमोरी? बेसिकली वो प्रोसेसर और आपके हार्ड डिस्क के बीच में रहेगा. तो आप जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ना, तो वो उसका कॉपी स्टोर करता है. इसलिए आपने कभी कभी व्हाट्सएप का कैश क्लियर किया तो व्हाट्सएप क्लियर नहीं होता है, सिर्फ कैश क्लियर होता है. आप कोई भी एप्लीकेशन का कैश क्लियर करोगे या सैशे क्लियर करोगे तो वो सिर्फ उतना ही क्लियर होगा, क्योंकि वो आपने जो फाइल्स बार बार रिक्वेस्ट करी थी ना, वो उसका कॉपी स्टोर करता है. क्योंकि just imagine you tell your mother every time to go and get a glass of water, so better she keeps a water bottle, you keep the register the bottle na, that's cash. Is that clear? Next one, computer address bus. Address bus online. How many of you say bidirectional? How many of you say unidirectional? तो भूल ने बताया था मुझे, address bus is what direction? Address bus is unidirectional. Okay. Next one, which of the following circuit is used to store 1-bit data? Please mark the option as flip-flop. It is a memory and it is capable of only storing 0 or 1.
Either वो 0 स्टोर करेगा या फिर 1 स्टोर करेगा. Okay. Next is, which of the following is a way in which the components of a computer are connected to each other? Architecture. Components, ये रहे मेरे components, connected and make formed what? Computer architecture. Okay, please mark option 2. Then subtraction is in computer is carried by 2's complement. 1's complement कैसे निकलता है? Inversion. 0 का 1, 1 का 0. And 2's complement निकालना है तो उस inversion में क्या add करना पड़ेगा? 1 add. Is that clear? So please mark the option as 2's complement. Next, which of the following is not an antivirus software? Yes, Linux is an operating system. You can mark it over there. Okay. Next is, in the context of digital computers, which of the following? For question 16, the answer is second, Linux. It's an OS, operating system. Okay. In the context of digital computer, which of the following pairs of digits is referred to as binary code? What is it? 0 and 1. Very good. Option 2. Which unit of the computer is considered as the brain of the computer? What is it? अरे आप नींद आ रही है क्या? अभी टेस्ट भी देना है, आधा घंटा ही है. Cheer up. What's the answer? You had breakfast? You had breakfast? Nobody had breakfast. Even I didn't have, but मेरा आवाज कितना मस्त आ रहा है. आप लोग का मेरे तक पहुंच ही नहीं रहा है. So its answer is CPU. Yes. Okay. Which of the what is the full form of PROM? Chalo, now you tell me. Programmable read-only memory. Option number 3. Okay, online. Yes. Primary read-only nahi bachcha Anushka. It's programmable read-only memory. Please check. Okay. Next is, in the context of computing, what is the full form of URL? That's Uniform Resource Locator. So जो URL means what, you know, आप किसी को बोलते हैं ना link भेज दे. So for you that link भेज दे, for me it is URL. Okay. Then which of the following is an input device used to enter motion data in computers or other electronic devices? So that's trackball. Second option, trackball. Okay, it's kind of input device. Gamings में use होता है usually. Next is, in the context of computing, a byte is equal to. You're awake. Wow, I'm so happy. Okay, so it's equal to 16 bits, no? Online 8 bits, right? So that's option number 4. Now, dash is a small portable flash memory card that plugs into computer's USB port and functions as portable hard drive. Option first, that is flash drive. That's your USB. आपका जो USB रहता है ना, पेन ड्राइव जो बोलते हैं आप, उसको फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव. Okay? Yeah, you can anytime. No problem. Okay. Ma'am, can you answer 20? 20th is third one, Uniform Resource Locator. Okay, ma'am. Thank you. Okay, coming back to question 24. That's which of the following devices is not used to enter data into a computer? ये तो जिसको नहीं मैंने सिखाया है आज वो भी बोल पाएगा. What's the answer? Until and unless the monitor is not a touch screen monitor. See, you have to think smart, no? Because nowadays we have laptops which are, they don't have keyboards. Like they, even if they have the keyboard and the, yes, that's a smart board. So I cannot, this does not come into the category of this. Okay, so agar touch screen monitor hai, so it's not the option, but if it is only monitor, then that's the correct answer. Okay, option 4. Which of the following is an input device of a computer? Very good, very nice. Scanner is the answer. What is that computer program called which translates one program instruction at a time into machine language? Now, this is something new to you, I'll tell you. We have programming languages in computers. C, C++, Java, आपने से भी ये नाम सुने रहेंगे. तो हर एक प्रोग्राम जब मैं लिखती हूँ ना, तो whether, जैसे मैंने बोला कि if I am talking in say Marathi, then I should talk it linguistic Marathi, मतलब correct Marathi. मुझे जैसी आई वैसे बोल के it's not going to help.
Somebody who is a Maharashtrian will correct me, no, this is wrong. It is not pronounced like this. It is to be pronounced the other way. Okay. So same is with the computer. जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज आपने C++ लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, तो उसका एक तरीका रहता है, सिंटैक्स बोलते हैं जैसे लिखने का. तो वो मुझे कौन बताएगा कि मैंने सही तरीके से लिखा है कि गलत तरीके से लिखा है? तो दैट इज टोल्ड बाय द कंपाइलर. Okay, but converting that program into what my system understands is done by interpreter. नाम से ही समझता है, इंटरप्रेट करके दे रहा है कि प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट करना चाहता है, और वो एग्जीक्यूट करके सिस्टम आपको आउटपुट पे दिखाता है. तो ऑप्शन इज 4. आंसर, करेक्ट आंसर इज 4. Now, what is another name for additive manufacturing? That's 3D printing. That's 3D printing. You got it, no? He didn't give you. You didn't ask for worksheet. Okay, so you just, if you can just share with her, so and just take the photos, or otherwise answer key will be uploaded. You'll have the access. You'll get the answer key there. Okay, question 28. What is decorative text called that you can add to a document? Word art. The answer is word art. Didn't give 27 answer. 27, I told you better, it is 3D printing. Option 1, 3D printing. Okay, so can we go to 29? That is, if a word is typed that is not in MS Word's dictionary, a wavy underline appears below the word. What color does it have? What color does it have? अगर मैं बोलूं रेड आंसर नहीं है तो no, it's red. You're correct. Okay, so the wavy underline which you say for the incorrect word, okay, it shows what color it is, red. Next is a type of instruction that can produce several lines of machine language code. That's called as macro. Macro. Okay, the term time sharing has been replaced by what? Online time sharing has been replaced by multitasking, multi-programming, multi-processing, multi-execution. Time sharing. Please mark option 1, that is multitasking. There is a multitasking. Task means processes. So multiple tasks are being performed at a time. Okay. Then press dash to open find dialog box. So please mark option first, that is control F. So later on when you go home, थोड़ा keyboard के shortcuts भी पढ़ लेना. Like you'll get it. So if you want, maybe in a week's time I will upload it if I have. आपको access मिलेगा studies का. So you'll have it over there. So उसमें shortcuts रहेंगे कीबोर्ड के, कौन से basic shortcuts रहते हैं, so you can study that. Next is, what is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving, and printing a text document? Yes, it's the first one, word processing. Online, I hope even you are marking it. Yes, that's correct. Then what happens when you click on insert picture and clip art? Yes, it opens up clip art taskbar. Taskbar open हो जाएगा clip art का, फिर आप उसमें से select कर सकते हैं आपको कौन से shapes and sizes and whatever you want. Okay, so that's option 3. 35. What is a motion path? So please mark option 3, a method of moving items on a slide. Okay, and question 36. What does HTML stands for? So now see, always remember, जब कंप्यूटर को प्रोसेस प्रोग्राम करना है ना, तो उसका लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज. आपको कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम करना है, ठीक है, एप्लीकेशन बना है तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. और अगर आपको वेबसाइट्स बनानी है तो उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं. तो ये अलग अलग कैटेगरी याद रखो हमेशा, ठीक है. माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करना है तो मैं असेंबली लैंग्वेज सिखाऊंगी. अगर मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है, जैसे कैलकुलेटर, तो उसके लिए मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगी. अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है मेरे कॉलेज की, तो मैं उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिखाऊंगी. सो द वन ऑफ द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस HTML stands for hypertext markup language. Okay, please mark option A, that is the first one. Online, I hope even you are doing it. Yes, Ashika, you're right.
Next, what does the W3C stand for? It's World Wide Web Consortium, the first option. Then next question, World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee, second option. Then last one, 39, question number 39, which among these is not a web browser? Yes, www, that's not a web browser. Chrome, Opera, NetSurf, these are all your browsers. Okay. Then which of the following is not HTML tag? Of course, you must be not knowing this. So HTML जो scripting language है उसको ऐसे angle brackets में लिखा जाता है. So the last one which you see in the option, that is list. ऐसा list करके कोई tag नहीं है, उसके लिए li ऐसा एक tag है. So list पूरा लिखा हुआ कोई tag नहीं रहता उसमें. ठीक है? So that's your computer's worksheet. Now I come to your GK. The last one, beta. No, List 38. tag. Question, which question do you want? 38, ma'am. 38, right, second option, Tim Berners. Okay. So now coming to your GK, which we haven't discussed in this 1.5 hours. GK is something that is not to be taught. Always remember that. My general knowledge is probably different than what you might be knowing more than me. Okay. So I know you don't like reading, but it is a request. Please surprise your parents by reading newspapers. Because of course, for current affairs, definitely you will have to, current affairs, national as well as international, you'll have to refer to your newspapers. And of course, we have the practice papers and sheets, but then you also check for questions which are, GK questions regarding national, international, current affairs, which are in the past, say 6 months to 1 year. So refer them as well. You will get it online as well. Okay, I have uploaded practice papers, but see, GK is very, you cannot just compress it into set of questions. General knowledge cannot be compressed. So you need your extra reading as well. Okay, so what these worksheets are prepared are questions which are, we are just expecting that such kind of questions were asked in the last exam and previously, of course, when we had started the course. So we'll just discuss these questions now. Your general knowledge is divided into different culture, trade, current affairs, national, international. So every session, like this is my first session with you. Next session, we'll see something else. So this session, we have current affairs, but national. Next session, we'll see current affairs, but international. Okay, so these are certain set of questions. We'll just discuss them. So first one, which union ministry launched the Prajwala challenge? The answer is the second one. Online, I think even you have, no, the worksheet for GK. Please open that and we'll just solve that quickly. So first one, the answer is Ministry of Rural Development, Prajwala. Okay. So see, all such things you will have to keep yourself updated. So अभी latest जितना चल रहा है उतना भी revise कर लेना, and then last 6 months to 1 year. Then which institution has urged stock exchanges? So इसमें stock SEBI दिख रहा है. Okay, so kind of start interrelating the keywords in the question and the option. SEBI का full form? Stock Exchange Boards of India. Yeah. Security and Exchange Boards of India. Right. Third one, who was appointed as the first women director general? That is DG of Indian Council of Forestry. That's Kanchan Devi. First option. Kanchan Devi. Now, which organization and Ministry of Defense inked a contract for around 3,000 crores for upgraded super rapid guns? No, second option, BHEL, that is Bharat Heavy Electricals Limited. Okay, yeah, L&T. But the third answer is beta Kanchan Devi, first one. Okay, question number 5. Who has been appointed as the independent director of FMCG? Tarun Bajaj. Please mark the answer, Tarun Bajaj. So which of the following ministries has launched National Best Tourism Village Competition 2024? So that's recent kind of.
So the answer is Union Tourism Ministry. Of course, वो agriculture वगैरह तो इसमें आता नहीं, tourist बोला है तो that's how you interrelate. Then what percentage of FDI proposals for neighboring countries which Indian city hosted 11th Bangladesh Book Fair of 2023 and that's Kolkata? Option 1. In November 2023, Reserve Bank of India has cancelled the license for which cooperative bank and that's Shankar Rao Pujari Nutan, that bank. Okay. Question 10. India Internet Governance Forum 2023. That's New Delhi. Which flag carrier of India has shut down in its 2 data centers and moved its computational workload to cloud? That's Air India. So Ras Mahotsav or Ras Leela, Festival of? No, it's Assam. Under Atal Innovation Mission, what is the maximum grant provided to established AIC and that's 10 crore? On which of the following days does Nagaland observe Statehood Day? That's 1st of December. Next, which Indian city has been added to the UNESCO Creative Cities Network? That's Kozhikode. Option 2. Which union minister launched the National Outreach Program on Anganwadi Protocol for Children? That's Smriti Irani. Who has been appointed as the additional independent director of HDFC Bank? Harsh Kumar Banwal. Yes. Next, what was the name of Air India's AI powered chat assistant? I think this was even asked in KBC, if I'm not wrong. I had heard that. That's Maharaja is the answer. AI powered chat assistant, Maharaja. Who has been selected for the 2023 Satyajit Ray Lifetime Achievement Awards, which were held in Goa, and that's Michael Douglas. Option 4. What is the name of Indigo's AI-powered chat assistant? That is 6 Sky. First option. Who among the following won the gold medal in archery in National Games 2023? That's Deepika Kumari. Question 22. In 2017, who was appointed as a new brand ambassador of Swachh Bharat? And that's Shilpa Shetty. In 2023, it is 2017, it is asking. So that's Shilpa Shetty. The largest public sector undertaking in the country is, always remember, it's railways. What is the name of the first Indian woman who wins the Man Booker's Prize? And that's Arundhati Roy, very famous. And the father of Indian missile technology, this you can answer. APJ Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. So that's done with. So this is how the worksheets, of course, for GK. Of course, if I get some new content, I will definitely come and share with you. But please make sure that you study go through few GK questions, cultural, trade, commerce, then even go through questions which are, recently asked. Check for entrance exams questions online you will get. So it should help you because there the questions are very vast. Putting them on paper makes sense. With limited time, it's quite difficult. Go through newspapers, check for articles which are there. Newspapers you find online also, even like a past year newspaper you'll find online. So please go through all of them. So I think we'll quickly start a test. First, which test we'll solve? Computer basics? Yeah, tell me, just a minute. Can you answer first and seventh one? Yeah, sure, I'll tell you. You need for GK, right? Yeah. The seventh is 50%, option 1. And first one is Ministry of Rural Development. Okay, ma'am. Thank you. Okay. So which test you will solve first? Online even you are supposed to solve the test. Do you have it with you? Is it shared?
Yeah, I think they must have shared. If not, then I'll share it with you. So which test are you planning to solve first? Computers GK, or ma'am. GK? No, I think computers or GK first. GK first. Then we do computers. Chalo then. I'll just share the test with you. Just a minute. Yeah, online I think even they've shared. So please start. So I think we'll solve GK first. And please, even if you're besties and good friends and whatever, but still don't show answers to each other because it matters to me a lot that what is your score. Okay? I don't want to shift places, but you can make some distance between each other and just avoid seeing. You know, you have a notebook, right, with you? So just open the flap and just hide that paper with the flap if you can. Not all, yeah. You guys are not, you're not in the doubt. Okay, so we'll start. I'll give you like 10 minutes is enough. Ideally, we give 15 minutes, but I think 10 minutes are enough. 10 minutes for GK. Once you are done, please tell me. Then we'll immediately start computers. Then we'll discuss the answers. Online, I think it's sharp 10. So 10:10, we stop your GK test. 10:20, we stop your computer basics test. And the last 10 minutes, we'll quickly discuss the answers, your scores, and a revision. And it's absolutely fine if you don't know. And while calculating your marks, please be honest to yourself, not to me. What's your name? Hriday. Online, please don't do any copying or searching, surfing it from your mobile. Please be very, very honest this paper. Because then if you get how many marks, I think, how many questions? 15, no? So if you get 15 on 15, then my offline students will say, ma'am, they are online. They can even copy. So I don't want that to happen. Done? What's your name? Kingdom Jamal. Not in the lecture. I will discuss on that. I was just very intrigued to know that how come you people solved it 10 minutes of paper so early. Yes, sir. You are solving, showing him. The book is to be kept it like this so that he does not see. Okay, receive this side. Good, good. His है ना? ये किसका है? हाँ. I can't say anything to Bo. She came late, no? Online, if you are done solving, then even you can tell me that they are done so that it's quite
fast of you to solve 10 minutes test in 1 minute. Yes, online. Have you finished? Has anybody finished? Yes, Harsh, Archita, Lok, Siddharth, Sanskruti, Pavan. I hope you guys are solving. Yes, Harsh, done. Good. Done. Don't alter any of your answers. Huh? How many of you are solving? Okay, we still have like, we started a bit late, not exactly at 10, so that's okay. Just let me know once you are done. Online, please, even you acknowledge if you are done. And 1, 2, 3, 4. You're done? Last? No, you take your time. Solving? Done? Yes, second last? You're still solving? No problem. I'm done. Okay. You're just waiting for somebody to finish. GK done? So I think we'll start with computers then. Answers we'll discuss all together. So you can start your computer basics test. वो भी हो गया अच्छी बात है. I'll wish you luck more for computers. Yes, online even you can start with your computer basics test. We'll discuss all the answers together. Okay, so 10 minutes, computer basics. Please read the options carefully. Just don't select wrong answers in hurry. Done with computers also? Yes?
Online, even you can just drop a message if you're done. Good, good. Please let me know once you're done. Huh? Few questions must be relating to what we discussed today, no? Few. I mean, maximum should be relating to what we have discussed today. Okay, online, how many of you are still solving? Because I think I'm done here offline. Maximum, all of them have finished, so I can discuss. Yes, please acknowledge so that I can start discussing the test. Now, where? What happened? Not able to open. Even the one which sir must have shared, no? Check that. Both of us have shared, so please check. Okay, so I think all of you are done. No, ma'am. No? So how long will you take? 5 more minutes more. Five more minutes? Okay, fine. Then I'll wait for 5 minutes. What happened? So meanwhile, just tell me that you know this KB, MB, GB, TB. What's the full form? KB? Kilobytes. MB? Megabytes. TB? Terabytes. GB? Gigabytes. साइज पता है? साइज पता है? मतलब कितने को 1 GB बोलते हैं या कितने को 1 MB बोलते हैं, कितने को 1 KB बोलते हैं? एक क्वेश्चन आया ना अभी, आई थिंक जीके में आया ना वो, कि कंप्यूटर्स में ही है. ओके, नहीं जीके में भी है एक, जीके में आया. Every time you see me, I am seeing you. Just remember that. Okay, online. How long? I think it's okay. Now I'll just send it. You see if you can open that again. You want which test paper you want? Both the test papers? Computer test. Okay, I'm just sending it once again. See if you can open that. Okay, so I think everyone is done online. I hope even you have finished with the test. So we'll just quickly discuss the test for GK first. Online, are you with me? Okay. So we'll quickly discuss the GK test. Please be very, very, very honest to yourselves. Please, pencil से कोई test नहीं solve किया ना? Yeah, because then you are you are tend to erase it and then mark it with pen.
Please don't do that. Okay, so very first question for our test is which Mughal ruler was associated with Bibi ka Maqbara? Of course, it was Aurangzeb. Latest Option 3. national Aurangzeb, option 3, yeah. And what's the issue going on currently? Current affairs only. What's going on because of Aurangzeb? Some at Nagpur, yeah, that they want to destroy his tomb. So that for that there are conflicts and riots which are currently going on. So again in GK. Okay, so that's option 3. Question 2: how many times can an American president be elected? Of course, it's 8 Option 2. years. 8 years, 2 times. Okay. Then question 3: how many MBs are 1 GB? So that's up, recharge, prepaid, postpaid. You use no net packs, data packs. So it's Option 2. 1024. But what? It's 1024 MB makes 1 GB, and 1024 GB makes 1 TB. Okay. So then 1024 bits will make 1 KB. 1024 KB will make 1 MB. So it's all interrelated like that. Okay. So that's option 3. Question number 4: what does COVID-19 mean? And it means Option 3. option 3. अरे तुम COVID students हो यार. We always categorize as COVID students. So that's coronavirus. तूने क्या select किया है हृदय? Like it's literally surprising that how come you can select that option. It's of course coronavirus disease 2019, a very big pandemic affected lots of people, and you cannot just simply forget the name so early within 5 years. Okay, so question number 5: which probe launch influenced the movie Mission Mangal? And that's Mars Option Orbiter 1. Mission Mangalyaan. Okay, movie उससे तो याद आ जाएगा. Then which revolutionary established the slogan Jai Jawan Jai Kisan? It's Lal Option Bahadur 2. Shastri. Option 2. Yes, very good. Then who is the writer of God of Small Things? It's that Arundhati Roy. Option 4. Option 1. Option 1, Arundhati Roy. Sorry, option 1. Sorry. Where does the Bhil tribe, where do you find this Bhil tribe? And it's in Rajasthan. Okay. Next, what is Nagpur famous for? Not for riots, of course. It's famous for oranges. Yes, it's famous for oranges. How long does a test match last? 5 days. Over 5 days. Then when is Earth Day celebrated? It's 22nd of April. Please mark it if you have got it wrong. Then Taekwondo is from which country? Korea. It's from Korea. Then which state in India has its own constitution? Without any doubt, it's Jammu and Kashmir. Name the smallest continent in the world. That's Australia. You can see the options only can remind you of the size, and then you can just make a guess. What is the language from which the word tsunami comes from? That's Japanese. Now, if you want, then you can write down that tsunami, that nami is called as a wave, and the TSU su is called as a port. So it's a port wave. That is how it is named, tsunami. So I would like to know your scores. How many? Online, you can just tell me your scores. 10. Okay, not bad. Ma'am, 11 7. because तूने वो कोरोना वायरस सिलेक्ट नहीं किया तो वो 12 हो जाता था. 10, fine, not bad. Ma'am, 7. 11. Okay, 11. Okay, so it's if it is like 10 or above 10 or okay 8 or above, it's fine, considerable. If it is going below, then please start brushing up with GK. It's time now. Okay, how much? 10. It's okay, that's fine. Just for the first time, so it's okay. Okay, so now we start with the test with computer basics. हाँ वो बाकी रह गई, वही तो मेन है. कंप्यूटर बेसिक्स नहीं मतलब डिस्कस करना. Okay, first one. Dash is a large and expensive computer which is capable of simultaneous processing. What's the answer? Yeah, it's mainframe. Supercomputer's mainframe. Option 3. Option 3. Then when your computer stops working suddenly, it is referred to as a crash. It's a crash. Option 1. Option A. Yeah. All computers must have an operating system. That is the
Operating system is the Option hriday 2. of the computer system. That's the heart of your computer system. Okay. Option 2 is the answer. Laptops are, ये सारे logical है. जो अभी आप, we are not आंगनवाड़ी students. You understand आंगनवाड़ी? They sit under the tree and the small little school. You are not that. You are very tech savvy. So these questions should be very you should be very apt. So answer is portable, lightweight, option 3. Then question 5, devices that make up a computer system that you can see or touch. Hardware. So input और output devices में सॉफ्टवेयर आता है कहीं पे? सॉफ्टवेयर का मतलब पता है? ये क्या है सब? All this is that is running is software. But when I touch this board, this is hardware. So things which you can touch, that's your hardware. Things which are present in a logical form are software. So physical components, hardware, logical components, software. Okay, so option 4. Question 6, a dash contains specific rules and words that express the logical steps of an algorithm. What's the answer? It's a programming language. That's option 1 with a programming language. Now, what is, say I told you, C, C++. तो इसमें ना दो चीजें आती है. There's something called an algorithm and flowchart. So algorithm means what? Suppose your mummy wants to make try some new recipe. So she will go either on Google, she'll search something. तो उनको दो types की information आएगी, एक video और एक text with images. तो that text with images is step by step instruction ना, जो उनको बताते हैं उनको क्या क्या ingredients लगेंगे वगैरह. So that's algorithm. ठीक है? So the step by step instruction is an algorithm. But when I change it into a diagrammatic representation, that is a video or images, that is a flow chart. So हमेशा याद रखना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीजें रहेगी. एक एल्गोरिदम रहेगा जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताएगा कि कैसे प्रोग्राम लिखना है, और एक फ्लो चार्ट रहेगा जो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना कि कैसे वो फ्लो चार्ट बना या प्रोग्राम बना. ठीक है? सो द आंसर इज algorithm. Sorry, programming language for the algorithms. Next is question number 7. To prepare a presentation or slideshow, which application is PowerPoint? Yes, the answer is PowerPoint. Then question number 8. An error in computer program is called as, it is a bug. आपका MIUI कौन MI users है? Android MI users, all iPhones or what? Android MI users. उसमें MI एक certain time के बाद after 3 years the application stop because the updates start coming. Updates आना बंद हो जाती है. Maximum 3 से 4 साल. उसके बाद ना जो fixing किया रहता है मेरे जैसे developers ने, वो बाहर आना चालू हो जाता है. So that is the time it keeps on popping up MIUI bug. Okay, so please write down. The option 3 is correct, that it is an error in the computer program. Next is, which is the slowest internet connection service? That's dial-up service. Then video conferencing. Yeah, option number 4 for question number 9. Now question 10, video conferencing required a microphone, speaker, and of course a video camera. Yeah, option 3, correct. Then to reload a web page, press. Now there are 2 options here, reload as well as restore. So you can select, मतलब इसमें आ गए हैं दोनों correct options, वहां पे ideally कोई एक ही आएगा. अभी ब्राउजर पे जाके चेक करोगे तो वो reload option पॉपअप बताता है, बट पुराना ब्राउजर का जो वर्जन था, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला, वहां पे रिफ्रेश बताता था. So it is changing. So both the contents are correct. So for time being you can, अगर आपने दोनों में से कोई एक select किया है, either reload or refresh, it is correct. Ma'am, Okay. I have option 3. Yeah, no, option 3 is restore. No. It's either reload or refresh. So question number 12, devices that allow you to put information into the computer system, into the system. Answer is input. Input device. And keyboards, scanners, microphones are examples of what kind of devices? Input devices. The central processing unit contains which of the following as a component? Yes, ALU, arithmetic logic unit. And last question, 8 bits of its actually data. 8 bits of data is a byte. Okay, so I hope online even you got all the answers for the questions. Now I want the mark.
हाँ 13 गुड नॉट बैड गुड ओ गुड नाइस 14 गुड चलेगा ना अभी तो और करेंगे ठीक है you can still just brush it up and drag up to about 10 it should go about 10 at least 12 not bad not good good okay the way of packing man I'm yet to revise ऐसा भगाओ मत यार मुझे I am so happy to see you okay so we'll just quickly 2 minutes like I think I have still 4 minutes it's enough for me to just revise what we did today so if I ask you what's the full form for CPU online even you can join I hope just a minute I can see your scores and they're definitely good you can do much better nice 14 10 not bad okay so what's the full form for CPU और कोविड किस डिजीज उसका फुल फॉर्म क्या है कोविड-19 नहीं कोविड कौन सा वायरस हाँ नॉट सम इन्फेक्शन वायरस विच इज सिलेक्टेड ओके so fine CPU central processing unit and where is that OS located examiner system it is in the which memory okay I'll be very specific which memory ROM what's the full form for ROM read only memory volatile है कि non volatile है उसका मतलब क्या even if the power is turned off it still consists the data what's the type of ROM PROM EPROM and EEPROM fine RAM का full form what are the types of RAM SRAM DRAM online even you can join there's no problem at all SRAM DRAM what's the full form for SRAM static for DRAM fine if I ask you what is a bit represented as 0 or 1 how many bits make a nibble how many bits make a byte okay how many number systems did we discuss today which are those 4 number systems binary okay binary decimal octal hexadecimal if I ask you the base for binary what's the base for the binary number system and how did you get what that 2 from where from the range that is 0 and 1 then what's the base for decimal 10 what's the range for decimal 0 to 9 then what's the base for hexadecimal hexadecimal मैंने इसलिए बोला कि मैं कभी भी सीक्वेंस में नहीं पूछूंगी okay it's 16 so what's the range for 16 0 to 9 and A to F fine then lastly octal what's the base 8 and what's the range fine then कितनी buses है computer system में 3 which are those 3 data bus address bus and control bus can you tell me the direction for data bus phi dash for address bus for control bus and what does the control bus basically do yeah sends the controlling signals and communications with all the components fine what does the data bus carry what does the address bus carry address then done with control unit ALU what's the full form arithmetic logical unit तो ये एक ही काम करेगा कि दो अलग यूनिट्स है इंटरनली दो अलग एक यूनिट कौन सा है अरिथमेटिक कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशंस okay add subtract multiply divide mod all kind of mathematical and logical like modify add delete organize okay fine insert everything fine then that's for your ALU then memory we discussed RAM ROM then anything apart from this two input output input how will you define an input device or the input component okay the devices which will help you to insert information into the computer system and the devices which will generate some display the generated output तो मैंने 3 words बोले थे कुछ keywords लिख के रखने fetch decode and execute fetching does what takes the data from the input device decoding who does and executing and displaying the output is your output ठीक है फिर RAM ROM तो प्राइमरी हो गया सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क में क्या
ओके, सेकेंडरी में और भी आता है आपका, जो सीडी रहता है, डीवीडी, ये सारा सेकेंडरी है, डोंट फॉरगेट। आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसको बोलते हैं वो भी सेकेंडरी है। तो हार्ड डिस्क में टाइप्स कौन से थे? एसएसडी एंड एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड एसएसडी का सॉलिड। व्हाट द फास्टेस्ट बिटवीन बोथ? बट अगर मैं मेमोरी में ओवरऑल पूछूं कि फास्टेस्ट कौन सा है, तो मैं ऑप्शंस में रजिस्टर है, रैम है और हार्ड डिस्क है, तो तीनों में फास्टर कौन सा जाएगा? मैंने आपको बोला था 8085 कितने बिट का प्रोसेसर है? 8 बिट। उसके रजिस्टर्स कितने बिट के थे? यहाँ पे लिखा है ना, रजिस्टर्स कितने बिट के? 8, सिंगल सिंगल। तो वो 8 बिट डेटा डील करेगा, पर मैंने आपको बोला मेमोरी लोकेशन 16 बिट का आता है हमेशा, तो कैसे डील करेगा? प्रोसेसर 8 का है, मेमोरी 16 का है, रजिस्टर भी 8 के ही अवेलेबल है। हाँ, तो वो दोनों को कंबाइन करके डील करेगा। इज दैट क्लियर? फिर सपोज माय रैम स्टोर्स व्हाट? RAM stores what basically? Currently running processes. And ROM stores OS, BIOS, host, सारे setups. तो suppose if I tell you कि मेरा एक application है जिसने मेरा maximum RAM occupy कर लिया, I don't have anything left for other processes. Where will they go? Virtual memory, but where? Basically in the secondary memory. Okay, so it acts as if it is running in the primary, but it is basically running where? In the, so remember कहीं पे pencil से लिख दो terms like paging. ये पेजिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से वो ये काम करेगा, स्वैप इन स्वैप आउट करता रहेगा। ठीक है, सो या, सो टाइम इज डन। आई होप you understood the concepts for today's session. Yes, I ma'am. really hope Understood. to see you in the next session. Yes, online. I hope you also had a quick revision with me. Yes, ma'am. Yes, see you next week then. Please keep revising. Next week you guys are revising. First 2 minutes I will definitely take the revision of all the components. Okay, and okay, thank you. Yes, You online. too, I think ma'am. I'll, Thank you. yes, thank you so much. I'll end the meeting for you as well.